Ji, Pawan Kr Sharma Ji, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. Today, we have evening webinar on how to conduct proof of efficacy for Ayush industry. It is an important subject. We have eminent speaker, Dr. Anil Kumar Shukla, Dr. Pawan Kr Sharma, Dr. Rajeev Kurele, Mr. Rajesh Sethiya. I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on how to conduct proof of efficacy for Ayush industry. Welcome once again. I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, Sharma ji. Thank you very much. We would like to welcome Rajesh Sethiya ji, who is president of Ayush Nirmata Sangh. He is very active in Madhya Pradesh, having a great, huge membership of Ayurvedic manufacturers. So, ये आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइसेंस लेने के पहले प्रूफ ऑफ एफिकेसी लेना है. ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और ये नियम है शासन का कि कोई भी हमको नया एथिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रूफ ऑफ एफिकेसी की जरूरत है और उसका हमको जीसीपी भी बना के दिया गया. आयुष का जीसीपी भी आ गया. आयुष की क्लिनिकल रिसर्च किस तरह से हो वो स्टेप बाय स्टेप वो भी आ गई. तो आज मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा संकोच करते हैं कि हम क्लिनिकल रिसर्च करेंगे, बहुत खर्चा आएगा, अरे इसमें तो बहुत टेंशन है, खटराक का काम है. Formulation we were discussing Amrita Rishta. Acha, and इसमें it's a very simple formulation. Known the formulation that was discussed was from Vaishyaji Ratnavali, and very well appreciated formulation, Giloy, and then the 10 dravyas from Dashmul group, and then Prakshepa Dravya and the manufacturing procedure. Now, this is all written very clearly in Vaishyaji Ratnavali, Jvara Adhikara Slokas 690 to 693. All this is very clearly described. The question then is, are we manufacturing these things to the right standard? And if we are manufacturing it to the right standard, what are those procedures? And finally, the outcome. If we are giving this for somebody, then are we able to measure the outcome? Now, when we look at a simple formulation like Dashmul, and we look at the effect on Vat, Pitt, Kaph, or usme the Laghu Panchamul and Brihat Panchamul, and their different effects, we can look at it from the Ayurvedic contemporary or the classical Ayurvedic perspective. And we are saying, iski kaise, how do you measure the efficacy of these things? And then together with Giloy, when we make Amrita Rishtam, how will we measure the efficacy? And the same question can be asked for any formulation, whether it is Trikatu, whether it is Triphala, whether it is whichever, Chavanprash, how do we know what is? So it's a complicated problem, and it gets even more complicated when we come to the range of complex formulations where we are using rasa preparations, rasa aushadhis, etc. The complexity becomes very difficult. Now, my recommendation here is that our measurement must be consistent with the Ayurvedic thinking. When we says Vat Pit Shamak kaise maapein isko, or Vat Kaph Shamak, how do you measure this? And I think we shouldn't forget that aspect. But do we know how to measure it? Number one. Dusri cheez, we have in the Ayush systems, in Ayurveda, starting with,
we have areas like Swasthavrit, Dinacharya, Tirthacharya. How do you measure these things? How do you measure the efficacy, efficiency of these procedures? Can we connect all of these together? Can we connect the Aushadhiya ki outcome? Can we connect that along with the demand for Swasthavrit outcomes? What is the way? Is there a need for a new approach? How do we connect it with modern physiology, modern biochemistry? Uske saath kuch ho sakti hai ki nahi? So this is a question. I hope I have understood Pawanji's wishes correctly, that we need to understand some way of mapping proof of efficacy. And I think it can be done. And there are many techniques, many technologies, and there are a group of young minds who are researching in this space. We can come together with industry, we can do wonderful things. And this is particularly important at a time when India has taken responsibility for the World Health Organization Global Center for Traditional Medicine. And this is something that will come up again and again in our discussions, this issue of efficacy, standards, etc. So with those few words, let us listen to our experts, Pawanji, today, and then we will come to our discussion section. I'm so happy to see Kamini Dhimanji here with us today. Thank you, Ji, for joining us today. And also, Jha Saab is here. Yes, namaskar. I am also here. Jha Saab, Pranam Ji. Pranam, pranam. Pranam Ji, Pranam. Yes, I am also here. और अनिल शुक्ला जी भी है हमारे साथ. अनिल जी, प्रणाम जी. आप लोग शायद पवन जी, मे बी वी लिसन थोड़ा सा जहाँ साहब से सुने थोड़ा सा, अगर 5-2. जी जी जी. हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार जी. Thank you, sir. नमस्कार जी. So I am again thankful to all of you for giving me opportunity to share my views regarding today's topic. So as we know that the drug medicine is a tool by which we are fighting the treatment process. We can say that we are treating the patient, treating the disease as well. So the question is how to measure. So there are two ways. One is the modern pharmacology, and based on the particularly on phytochemicals, as well as the Ayurvedic way of investigation or the measurement to measure the efficacy of the drug. वास्तव में ये समस्या जो खड़ी हुई है वो खड़ी क्यों हुई? तो हुआ ऐसा कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट था वो चिकित्सक के पास था. चिकित्सक अपने पेशेंट के लिए सारा मैनेज करता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल से लेकर के और मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर डिस्पेंसिंग. हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रहा है जी, बिल्कुल. थैंक यू. हाँ, तो मेरा ये कहना था कि ये सारा का सारा ड्यूटी या सारा का सारा जो काम होता था वो चिकित्सक का होता था. कि चिकित्सक ड्रग आइडेंटिफिकेशन से शुरू करके मैन्युफैक्चरिंग और फिर डिस्पेंसिंग एज पर द नीड ऑफ द डिजीज, नीड ऑफ द पेशेंट. और इसमें कुछ इस तरह का बदलाव आया कि आज चिकित्सक डायग्नोसिस पर ज्यादा, ट्रीटमेंट पर ज्यादा ध्यान देता है और ड्रग का जो मैनेजमेंट है, ड्रग बनाने की बात जो है वो चली गई इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास. तो अब सवाल ये है कि अगर ईमानदारी अगर है और ईमानदारी में कम से कम जो सारे पैरामीटर्स आयुर्वेद के बताए गए हैं और साथ साथ जो इस समय एपीआई ने पैरामीटर्स दिए हैं ड्रग को आइडेंटिफाई करने से लेकर के और उसमें यूज करने से पहले, बिफोर यूजिंग इट फॉर द एनी प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, तो इस चीज को अगर हम पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक फॉलो करें
तो जैसे ड्रग हम कलेक्ट कर रहे हैं, प्लांट मटेरियल, सीजन, उसकी मैच्योरिटी और सही जगह से हम कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे पुराने आचार्यों ने दे रखे हैं उनको देखते हुए, और उसके बाद जो भी पैरामीटर्स हमारे एपीआई के अंतर्गत दिया गया, उन सब को फॉलो करते हुए अगर हम करते हैं तो, और फिर आगे का भी जो पर्टिकुलरली जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, तो प्रोसेसिंग वाले पार्ट में भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि अगर हम स्किल्ड नहीं हैं और खूब अच्छी तरह से प्रोसेस को नहीं जानते हैं, तो हम सही सही जो प्रिपरेशन है वो नहीं बना सकते, और या तो हम उसको कच्चा रख देंगे या स्पॉइल कर देंगे, जला देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन हर स्टेप को अगर हम सही तरह से फॉलो करें, तो खास करके जो एक चिकित्सक होता था, चिकित्सक को थ्रू आउट ट्रेनिंग होती थी पूरी की पूरी एट द लेवल ऑफ डिस्पेंसिंग, और डिस्पेंसिंग के समय भी अगर ड्रग में कोई मॉडिफिकेशन चाहता था तो वो फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता था कि व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज एसेंशियल, और अकॉर्डिंगली। हाँ, अब जैसे सिंपल सा एक उदाहरण मैं दूं कि जैसे हम त्रिफला का यूज कर रहे हैं, त्रिफला कई बार जैसे पेशेंट सामने है, यहाँ तो आयुर्वेद की चिकित्सा जो है मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, हाँ, वो व्यक्तिम व्यक्तिम वीक्ष्य प्रकृतितः विकृतितः, और ये सब विचार करके, और इसमें जैसे कहते हैं कि भाई मध्य कोष्ठ है, क्रूड कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, अलग अलग कोष्ठ हैं। त्रिफला किसी में बढ़िया लैक्सेशन करेगा, किसी में बढ़िया लैक्सेशन नहीं करेगा। तो पहले तो ये हमको जानना कि हमारे सामने जो पेशेंट है, हाँ, ये क्रूड कोष्ठी और मृदु कोष्ठी और मध्य कोष्ठी, अगर वो क्रूड कोष्ठी है तो चिकित्सक इमीडिएट त्रिफला में मॉडिफिकेशन करता है। डबल हरित की त्रिफला, सिंपल त्रिफला अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर क्रूड कोष्ठी है तो उसमें लैक्सेशन वाले पार्ट को हमें थोड़ा सा ऐसा सिनर्जाइज करना पड़ेगा या उसको पोटेंशिएट करना पड़ेगा जिससे क्रूड कोष्ठी पर भी वो इफेक्टिव हो सके। तो उसमें हरितकी को हम लोग खास करके अगर त्रिफला का देखें तो उसमें जो हरितकी है वो अनुलोमन करता है, और अनुलोमन की क्रिया जो है उसको हरितकी की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़िया करता है। तो डबल हरितकी त्रिफला हमने कर दिया। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन वो चिकित्सक के उस पर कि वो पेशेंट की नीड को समझते हुए और फिर इस तरह का मॉडिफिकेशन वो इमीडिएट वो करता है, और उसके हिसाब से उसको एक्शन भी मिलता है। और जो मतलब ड्रग का रेंज इतना बड़ा है, जो सिंगल ड्रग से लेकर के और मल्टीपल ड्रग के जो प्रिपरेशंस हमारे हैं और हजारों की संख्या में, और इसके बाद प्लांट से चले तो फिर क्या कहते हैं जो मिनरल बेस्ड सारे के सारे भस्म हैं, और क्या है, भस्मों के भी प्रिपरेशन में अगर दक्षता नहीं है, हम ठीक से नहीं उसको अगर बना पा रहे हैं, तो पता नहीं वो जो लाभ की बात हम सोचते हैं, शायद हो सकता है कि लाभ के बदले कई सारे नुकसान हमें झेलने पड़े। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं, और आज का विषय निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो वक्ता लोग हैं वो सब भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छा अनुभव सबके पास है। लेकिन जो आयुर्वेद कहीं पर अगर पिछड़ता है तो हमें लगता है कि वो मेडिसिन वाला जो पार्ट है वहां आकर के वो थोड़ा सा एक, जैसे कि सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, क्योंकि पहले बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, और ज्यादातर जो बड़ी बड़ी फार्मेसियां थी वहां भी मैनुअल पावर का ज्यादा इस्तेमाल होता था। अगर
हम बहुत खूब गहराई से फील करने की कोशिश करें, तो जो मैकेनिकल और मैनुअल, इन दोनों के डिफरेंस को कि हम हाथ से खरल में उसकी एक निश्चित समय तक जो निश्चित एक उसमें लक्षण अपीयर हों और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, ये सब करते हुए और उसके बाद जो गोलियां बनाई जाती थी उसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, ये सब। और आज जो सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, मुझे जो जहाँ तक मैं भी चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ और रोज का मेरा ये अनुभव है। मैं जिन औषधियों का आज से 50 साल पहले, 45 साल पहले जो इफिकेसी मैंने प्राप्त किया है, वो हमें आज नहीं मिल पा रही। अब उसमें कहाँ क्या खामी है, ये बहुत विचारणीय एक सब्जेक्ट है और निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि इसमें अगर पूरी की पूरी ईमानदारी रहे, और जैसा कि मैंने कहा कि मैनुअल से हट करके हम मैकेनिकल पर चले गए हैं, तो कुछ न कुछ जैसे आज वैसे कंसिस्टेंसी अगर च्यवनप्राश की देखें, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक्सपो लगा था और उसमें कम से कम 10 स्टॉल ऐसे होंगे जहां पर च्यवनप्राश लोग रखे थे, और जो भी क्या कहते हैं उसमें विजिटर्स थे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो च्यवनप्राश टेस्ट भी कराते थे, दिखाते थे। मैं भी उसमें घूम रहा था, देख रहा था, अननोन पर्सन की तरह से। कुछ लोग तो पहचान ले रहे थे, लेकिन बहुत लोग थे जो कि नहीं भी पहचानते थे। तो जितने च्यवनप्राश थे उतने फ्रेग्रेंस थे, उतनी कंसिस्टेंसी थी, उतना टेस्ट था। तो ये सब चीजें हैं, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। अगर हम सारंगधर को फॉलो कर रहे हैं, तो जो जितने लोग सारंगधर को फॉलो करेंगे उसमें एक रूपता तो होनी ही चाहिए। चरक को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो एक रूपता होनी चाहिए। हाँ, अगर आधार ग्रंथ बदल रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जो क्वालिटी होगी वो डिफर करेगा। लेकिन एक टेक्स्ट को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और फिर उसमें अगर भिन्नता आ रही है, तो ये तो फिर मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन जो बनाने वाला है उसके स्किल पर वो जा रहा है कि भाई वो किस है। दूसरा क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैकेनिकल अगर हम करते हैं तो हमारी एक वो एक बाध्यता हो जाती है कि हम कुछ लेवल पर कंप्रोमाइज करें, और वो कॉम्प्रोमाइज में जैसे एक च्यवनप्राश की कंसिस्टेंसी को मैं देखता हूँ कि शायद हमें लगता है कि मैकेनिकली जब हम फीलिंग करते हैं तो जिस कंसिस्टेंसी का हम मैनुअली फीलिंग कर रहे थे, उसी कंसिस्टेंसी को शायद मैकेनिकल करने में हमें परेशानी हो रही है, तो हमने कंसिस्टेंसी से। और दूसरा, और भी मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि च्यवनप्राश के लेवल पर कि सबसे बड़ा आंवले का उत्पादक एरिया प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ में जो इस समय आंवले का प्रोसेस करके लोग सप्लाई कर रहे हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर को, तो जैसे मतलब वो काम फार्मेसी का होता था कि उसको बॉयल करना, फिर उसको क्या कहते हैं उसमें से सीड और जो उसके थ्रेड से रेशे थे उसको। जी जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। तो जी सर, ये सारी चीजें हैं जो कि एक विचारणीय है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे के वक्ता को सुनने के लिए वो आगे बढ़ता हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम बढ़ावें आगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। क्षमा याचना के साथ मैंने रोका क्योंकि वो नहीं, ठीक है, अनिल ठीक है। शुक्ला जी को 6:30 जी बजे जी, कहीं नहीं नहीं, जाना था, ठीक है। ओके ओके। तो मैंने उनको प्रॉमिस मुझे किया पता। था कि मैं आपको 6:30 बजे छोड़ दूंगा। तो मैं समय नष्ट न करते हुए मेरे भाई प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द्रव्य गुण, मानसरोवर मेडिकल कॉलेज, वेलकम वेलकम अनिल जी, वेलकम। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपका इतना सुंदर प्रेजेंटेशन आ चुका है, मैं 15 मिनट आपसे चाहूंगा, और मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूं वो आप बिल्कुल अनिल और पवन दोनों जब साथ होंगे तो पवन ही है, अनिल माने एयर,
और पवन माने एयर तो फास्ट हो जाएगा। मैं मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आपकी इतनी अच्छी स्लाइड्स है बनी हुई कि मैं उसको सुपर फास्ट दिखाता जाऊंगा और आप सुपर फास्ट बोलते जाइए। जय हो, आपकी जय हो। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर मदन सर, प्रोफेसर ओझा सर और भगवान धन्वंतरि को नमन करते हुए सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। और मेरा सर ऐसा था कि मुझे लगा था कि इंडस्ट्री के ऑडियंस ज़्यादा रहेंगे, यहाँ तो सब एक्सपर्ट लोग हैं, तो मेरा प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं सर, क्योंकि ये सबको पता है जो मैं बोलने वाला था। मुझे एक कमिटमेंट है पहले से, सर ने कहा था 6 बजे का लेक्चर है, तो मैंने कहा था आधे घंटे सर बात करूंगा। फिर भी मैं आप लोगों के सामने सर अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जो मैंने 20 साल के सर मैंने स्टार्टिंग में ही, जब मैं बॉम्बे में एमडी कर रहा था पोद्दार से, तो मेरे एमडी में क्वालिटी कंट्रोल ही मेरा टॉपिक था। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी बिल्कुल। तो माय टॉपिक वाज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सराका अशोका बार्क। जैसा हम सब जानते हैं कि अशोक कितना पॉपुलर मेडिसिन है, और हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया का काफ़ी लोग यूज करते हैं। तो हम मुझे ये लगा कि भाई पॉलीएल्थिया का वैसे सेम प्रॉपर्टीज हैं, वही एक्टिविटीज हैं जो सराका अशोका करता है क्या। तो हमारे गाइड ने 1996 की बात कर रहा हूँ सर, 25 साल पहले, जबकि कॉलेजेस में, इवन बड़े इंस्टीट्यूशन में भी, जामनगर, एनआईए और बीएचयू में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे ड्रग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो हमने ये जो लेकुना था एक ड्रग को स्टैंडर्डाइज करने का फॉर एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो मैं सिर्फ बीआरसी में, डिफरेंट फार्मेसी कॉलेजेस में क्वालिटी कंट्रोल के लिए, हैवी मेटल एनालिसिस के लिए गया, और मैं ये देखा कि ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है ड्रग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। जैसे सर ओझा सर भी बात कर रहे थे, झा सर, सीवी झा सर बता रहे थे कि भी हरितकी के ऊपर ही है। त्रिफला में हरितकी कितना, अभी हम लोग 1:1:1 3 पार्ट्स लेते हैं, कोई 1:2:3 लेता है, कोई 1:2 का 1:2:4 भी है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुझे लगता था कि जो चैलेंजेस काफ़ी हैं सर। मुझे स्लाइड्स आज बोलने की मत बोलिए, मैं फिर अगली बार जब अपने ऑडियंस इंडस्ट्री के रहेंगे लोग, क्योंकि एकेडमिक लोग हैं, एकेडमिक से भी जानते हैं सर जो मैंने स्लाइड में बनाया हुआ है, तो मैं जो अपने केवल अनुभव शेयर करूंगा। यहाँ सब अनुभव है, लेकिन मैंने जो कुछ देखा सर उसकी बात करूंगा जरा मैं आज। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें सर ये पाया गया कि देखिए, अभी सर कह रहे थे कि लेग्जेशन प्रॉपर्टी चाहिए, तो 2 पार्ट हरित की अनुलोमन करती है, विरेचन करती है, तो उसमें बढ़ाना चाहिए सर। उसके साथ अगर अनुपान भी देखा जाए, जनरली लोग पानी के साथ लेते हैं, अगर दूध के साथ हम उस हरितकी का प्रयोग करें तो और अच्छा उसका अनुलोमन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए हमारा अनुपान से, डोज से, अभी हम लोग सर प्रॉपरली जनरली होता है कि इंडस्ट्री पे लेबल पे लिख देती है कि भाई ये 1 चम्मच 2 बार खाना है, 1 बार खाना है। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि उसका टाइम क्या होना चाहिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत कम लोग इंडस्ट्री वाले लिखते हैं। इवन हमारे प्रैक्टिस में सर, हम लोग जो क्लिनिक्स में, डिपेंड ऑन पेशेंट पूल आल्सो, कि पेशेंट बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डिटेल हम लोग ओपीडी में नहीं कर पाते। भाई 2 टैबलेट 2 बार खाना है, कोई रसायन भी है, या कोई लेग्जेशन का है, या कोई निद्राजन औषधि है, कुछ भी। तो इस पे हमको ये फोकस करना चाहिए सर कि हमारी इफिकेसी के लिए हम जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भेषज काल और भेषज मात्रा, ये टाइम एंड उसका, और कितने दिन तक लेना है। आरोग्यवर्धनी लोग लिखते रहते हैं सर, 2-2 महीने 3-3 महीने खाते रहते हैं। मंडल सेविता ऐसा लिखा हुआ है कि आरोग्यवर्धनी का सेवन 1 मंडल तक करना चाहिए। अब मंडल में कुछ लोग कहते हैं कि 21 डेज होता है, कुछ कहीं डिफरेंस है 41 डेज होता है। यहाँ सब एक्सपर्ट लोग हैं, तो बात करेंगे, बताएंगे। तो उसके बाद डिसकंटिन्यू करके वापस फिर हम चालू कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस किसी भी ड्रग का जो ड्यूरेशन हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसका हमको फॉलो करना चाहिए इफिकेसी के लिए। अभी तो बहुत सारी बैकग्राउंड में वॉइसेस आ रही हैं, तो मैं कह रहा था कि आजकल सर रिसेंटली पास्ट में गुड़सी के ऊपर इतनी कॉमन ड्रग हमारी है, उसकी इफिकेसी को लेके, उसके सेफ्टी को लेकर तमाम इश्यूज आए कि कुछ लोगों ने कहा कि ये हिपेटोटॉक्सिक है ड्रग। डॉक्टर मदन सर ने भी वहाँ पढ़ा होगा लंदन में रहते हुए भी कि भाई टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया वर्सेस टिनोस्पोरा क्रिस्पा। तो अगर हमको नॉलेज है कि टिनोस्पोरा क्रिस्पा और टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया में क्या डिफरेंस है, जो सोर्सिंग इंडस्ट्री कर रही है, इंडस्ट्री को भी ट्रेंड करना जरूरी है सर। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल इफिकेसी हम सब जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं वो सब जानते हैं, ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है इंडस्ट्री वालों को। जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, स्मॉल स्केल है या मीडियम स्केल या लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल लोग कुछ तो फॉलो करते हैं, और
बेसिकली मैंने जब स्टार्टिंग में सर मैं बताना चाह रहा था कि जब मैं एमडी करके निकला तो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी जिसको हम लोग क्लेम करते हैं कि जो फर्स्ट हर्बल सीआरओ नेम और वैदिक लाइफ साइंसेज। तो हमने वो बहुत अप्रोच किया बहुत बड़ी कंपनियों को, अब नाम भी लेने में बुराई नहीं कि वैद्यनाथ जैसी कंपनियां, डाबर जैसी कंपनियां को अप्रोच किया कि भाई आपने प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, उनके पास हॉस्पिटल का सेटअप तो होता नहीं, तो दे हैव टू आउटसोर्स था। जैसे भी डॉक्टर पवन सर जी ये मेट फार्मा सीआरओ के प्लेटफॉर्म पे जो हो रहा है आज का वेबिनार, तो जो सीआरओ हमारे पास जो फैसिलिटी नहीं है उसको हमको आउटसोर्स करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। मेरा मैसेज ये है, हमने तब बहुत मुश्किल से ट्रायल किया, और ट्रायल इसलिए प्रूफ ऑफ इफिकेसी के लिए आपने ड्रग को प्रॉपरली कलेक्ट भी कर लिया, प्रिजर्व भी कर लिया, कंजर्व भी कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया, उसको आपने प्रॉपर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया। लेकिन अगर आपने देखा कि आप कह रहे हैं मार्केट में जाके कि हमने बहुत अच्छे ढंग से रॉ मटेरियल हमारा है, बहुत हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके बनाया है, प्रोसेस कंट्रोल था, लेकिन इफिकेसी जो जिसने कुछ नहीं किया है वो आपका वर्सेस प्रोडक्ट जो आपने इतने अच्छे से किया है, तो रिकमेंडेड है कम से कम एटलीस्ट फेज 1 ट्रायल की जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। और इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष मिनिस्ट्री भी अभी कंपलसरी कर दिया है कि आपको जो क्लासिकल मेडिसिन के अलावा जो आप जो आज P2P बोलते हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मुझे लगता है डॉक्टर राजीव कुरेले जी उसके बारे में आगे बताएंगे, उन मेडिसिन को आपको क्लिनिकली प्रूव करके उसकी सेफ्टी इफिकेसी के लिए ही आपको तभी लाइसेंस दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस हिमाचल गवर्नमेंट में जब भी एक्साइज फ्री जोन डिक्लेयर हुआ था हिमाचल और बेसिकली उत्तराखंड, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ जाने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एल्केम हो, चरक हो, यू नेम इट, झंडू हो, डाबर हो, सब ने वहाँ प्रैक्टिस टैक्स सेविंग के लिए बनाया। लेकिन वहाँ कंपलसरी था कि अगर आपको वहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो आपका प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड होना चाहिए फॉर सेफ्टी एंड इफिकेसी। तो ऐसे यूनिफॉर्मिटी पूरे पैन इंडिया होना चाहिए पूरे भारत देश में। अलग अलग अभी हो गया है लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब अगस्त गैदरिंग में आप सब लोग इन्फ्लुएंसर हैं, मैं तो कहूंगा कि नॉट फॉर इंडस्ट्री लेकिन इन्फ्लुएंशियल बॉडी की मीटिंग यहाँ हो रही है, तो आप सब अपने इन्फ्लुएंस से इंडस्ट्री को, एकेडमिया को भी कहें कि, और जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हमारे हैं वो भी इंडस्ट्री के जब प्रोडक्ट यूज करें वो देखें और पूछें उनके प्रमोटर से या उनके जो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने आते हैं, इनफैक्ट जो मैनेजर्स हैं, कि उनकी प्रोडक्ट में क्या सेफ्टी क्या इफिकेसी स्टडी हुई है कि नहीं हुई है। तो उससे उनका भी बेनिफिट ऐसा रहेगा कि आजकल जैसे कोरोना काल में अभी डिमांड इतनी बढ़ गई है विदेशों में कि आपने देखा कि पीछे गुड़ची, अश्वगंधा और च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल नहीं था कोरोना टाइम में। तो हम उस समय तभी कर सकते हैं जब हमारा प्रोडक्ट हम जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद का है, सेफ है, लेकिन वो गुड़ची जैसी नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम कि लोगों ने देखा, मुझे लगता है वो बायस होगा, लेकिन लोगों ने कहा ये गुड़ची टॉक्सिसिटी करती है, हिपेटॉक्सिसिटी करती है, लेकिन कौन सी गुड़ची करती है। अब आपने अगर अपने प्रोडक्ट में टिनोस्पोरा क्रिस्पा रॉ मटेरियल यूज किया है गुड़ची के नाम पे, अगर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया नहीं लिया है तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट कर सके। इसलिए प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट का स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी सेफ्टी स्टडीज, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना बहुत ज़्यादा खर्चा है। एक मिस कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में है कि ये बहुत खर्चीला काम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर लोग का कमिटमेंट हो जाए और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं कि भाई हमको ऐसे थोड़ा करके काम करके या छोटा बिजनेस करके हमको आगे निकल जाना है या आयुर्वेद को सर्व करना है और पब्लिक को इन जनरल सर्व करना है, अपना हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, तो हमको हमारी प्रोडक्ट के का सेफ्टी और इफिकेसी इज मस्ट। तो मेरा सर इतना रिक्वेस्ट है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट सर और है, तो मुझे 7 o'clock से वहाँ पहुँचना है और मुझे वहाँ पहुँचने में 15-20 मिनट लगेंगे। मुझे लगता है ये पीपीटी में सर दोबारा शेयर करूँगा। और अभी कल एक बहुत अच्छी 2 वेबिनार हो गए कल, सब कुछ लोग शायद उसमें पार्टिसिपेट किए थे कि हमारी वेराइटी जैसे परपट लोग यूज करते हैं, अभी सडंग पानी का इतना यूज होता है सर, वो परपट, चंद्रकोशीर, चंदन उदित, चिनागरी, अब वो परपट 11 प्रकार का परपट मार्केट में अवेलेबल है। अब कौन सा परपट हम परपट यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, उसका इंडस्ट्री बेसिकली ये इंडस्ट्री को हमको जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उनकी सैंपलिंग, उनकी जो हम कहते हैं कंट्रोल सैंपल रखना, उनको ड्रग को रॉ मटेरियल से टेस्टिंग से लेके इन प्रोसेस टेस्टिंग और फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के बाद ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए विद सेफ्टी एंड एटलीस्ट फेज 1 प्रूफ ऑफ इफिकेसी स्टडी के साथ। तो मुझे लगता है हम सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए, और मैं वीडियो ऑफ करके सुनता रहूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा अभी ट्रेवल करना है, तो मैं हमारे अग्निहोत्री सर को नमस्कार है,
मैं चतुर्वेदी सर भी दिख रहे हैं। शुक्ला जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। तो मुझे लगता है कि ये विषय बहुत बड़ा है सर, ये 10-15 मिनट में चर्चा हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि एक बार इंडस्ट्री फोरम को बुला के अगर हम लोग चर्चा करेंगे इस पे तो काफी अच्छा रहेगा, जिसमें 150 लोग रहें तो हम लोग अपनी बातें रखेंगे तो ये पीपीटी का सदुपयोग भी होगा और हम सब लोगों के समय का और सबका सदुपयोग होगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्षमा चाहता हूँ, सब गुरु जी लोग बैठे हमारे, तो मैं सुनता रहूंगा लेकिन बोल नहीं पाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वैद राजन पाटकर सर से भोपाल आए थे, इनसे मुलाकात हुई थी सर, आपको भी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया कि वी मस्ट हैव अ बिगर गैदरिंग, कि इंडस्ट्री वाले भी आनी चाहिए इस टाइप का। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, एंड थैंक्स टू पवन जी फॉर ओपनिंग दिस डिस्कशन। पवन जी बहुत बहुत। अनिल जी वाज वेरी प्रिसाइज। यदि फिर लिंक चली जाए सर तो मैं फिर लिंक इशू कर रहा हूँ। आज अच्छा। ये जूम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मैं नहीं जानता क्यों जूम प्रॉब्लम कर रहा है, क्षमा चाहता हूं मैं उसके लिए एडवांस में। लेकिन फिर भी मैं राजेश सेठिया जी को आमंत्रित करता हूं कि राजेश सेठिया जी आयुष निर्माता संघ की ओर से कुछ कहें। हाँ भाई साहब हेलो सॉरी। हाँ सेठिया कुरेले जी जी, बोलिए, कुरेले जी बोलिए। अगर थोड़ी विस्तार की क्षमा करें तो सेठिया जी आप अगर बाद में कर लेंगे तो मैं 15 मिनट में, हाँ क्योंकि ठीक है, ठीक अभी है, मुझे ठीक है, ठीक है, कहीं ठीक है। निकलना है तो मैं सुन जी पाऊंगा, जी बोलने की स्थिति में शायद ना रह पाऊँ, तो अगर मौका जी देंगे तो बिल्कुल, मेहरबानी। जरूर कुरेले जी जरूर। और यदि बीच में जी, एंड पहले हो जाती है तो लिंक तुरंत शेयर करूंगा। हाँ एक सेकंड। आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे सीबी जहाँ सर भी जुड़े हैं, दीवान मैम भी जुड़ी हैं, हमारे विनीत अग्निहोत्री जी, प्रोफेसर मदन म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। प्रोफेसर मदन जी। अच्छा आवाज आ रही है सर? राजीव जी आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है जी। आवाज आ रहा है भाई साहब? हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो पहले तो मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, और आज हमारे गुरुदेव सीबी जहाँ साहब, हमारे विनीत अग्निहोत्री सर, कामनी मैम, मदन सर, राजेश जी, और सभी का एक ऐसा सानिध्य बना है कि एक अच्छा सा जिसे कहते हैं ना सगुन, और एक अच्छा सा एक जो है शुभकामनाएं आ रही हैं, जिससे इंडस्ट्री एक सही जाएगी। आज का बहुत ही एक वाजिब टॉपिक था, और प्रोफेसर अनिल सर हमारे शुरुआत से ही 2006 से मैं जब इनका सीआरओ बना हुआ था तो इनके साथ में जो है जो भी ये काम कहते थे वो कर देता था। तो आज की डेट में पहले तो बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे गुरुजनों के आशीर्वाद से उत्तराखंड स्टेट का मैं गवर्नमेंट ड्रग पैनल जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत लाइसेंसिंग पैनल में हूँ, तो रेगुलेशन का काम भी मैं देखता हूँ इसके साथ में। तो आज का जो टॉपिक सर ने रखा वो बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ एफिकेसी। तो ये क्या है और इसकी जरूरत क्या है, इसके विषय में मैं आता हूँ। प्रूफ कहते हैं प्रमाण को, आयुर्वेद में प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के दो शब्दों से बना है, प्रमा अनिनेति प्रमाणम। जिसके द्वारा ज्ञान होता है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो प्रमा है, उसी से प्रमाण बनता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो चीज सामने होती है उसके लिए कुछ पूछना नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब हम दवाई की बात करते हैं तो 5 बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसी को फिर आप इंग्लिश में या किसी भी भाषा में एक्ट में कुछ भी कहते रहें, लेकिन चूंकि हम डॉक्टर हैं तो 4 चतुष्पाद हैं। विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। इसमें जो है वैद्य है, औषधि है, उपचारक है और रोगी है। इन सबके लिए सारी सृष्टि बनी है, और उसकी जो कर्म करते हैं उसको चिकित्सा कर्म कहते हैं। और इसके लिए हमें औषधियों की जरूरत होती है। औषधियां हमारी संपन्न होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, बहुकल्पम होनी चाहिए, बहुत सारे अच्छे द्रव्यों से मिलके बनी होनी चाहिए। तो इसको बनाने के लिए जो रेशनल है उसको कैसे हो, वो प्रूफ ऑफ एफिकेसी है। तो बेसिक 5 चीजें हैं जो क्वेश्चन है कि हम क्या कर रहे हैं।
माने हम क्या कर रहे हैं, हम दवाई बना रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है, ये रिसर्च क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं। और कोई भी रिसर्च के लिए रिसर्च क्वेश्चन नहीं होते तब तक रिसर्च नहीं होती है। तो कोई भी ड्रग डेवलपमेंट की पहली प्रक्रिया का नाम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम औषधि का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि औषधि निर्माता हैं या इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या रिसर्चर हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक विषय को चयन करते हैं, एक प्रॉब्लम को चयन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोरोना हो गया, किसी को डायबिटीज की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को फीवर की समस्या है, किसी को नींद ना आने की समस्या है। तो हम पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं। फिर प्रॉब्लम पे वर्क करने के लिए हम अपने सिद्धांत के आधार पर, रोग और रोगी परीक्षा के आधार पर, अपने सिद्धांतों के जो मौलिक बुक्स हैं, जिसको ड्रग एक्ट में शेड्यूल बुक्स कहते हैं, ये 54 बुक्स थी, अब 3 बुक्स और जुड़ गई हैं, तो 57 बुक्स हैं। इन बुक्स के आधार पर जो भी लिखा है उसको हम सोचते हैं, थिंक प्रोसेस में लाते हैं, थॉट प्रोसेस में लाते हैं। उसके आधार पर हम एक फार्मूला बनाते हैं। उस फार्मूले को हम क्या कर रहे हैं, हम औषधि बना रहे हैं। हम क्या कैसे बना रहे हैं, हम इसमें घटक डाल रहे हैं। घटक कैसे होने चाहिए, वो रूल 161 में जो हमारा कंपाइल होने चाहिए। हमारे जितने भी जो घटक हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में वर्णित होने चाहिए। ये 2 तरह के होते हैं, क्लासिकल और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। और अगर फर्दर हम रिसर्च करके प्रूव कर लेते हैं तो पेटेंट मेडिसिन। फिर क्या है कि हम इस घटक को क्यों ले रहे हैं, ये क्यों का जवाब अपने आप से करना है। ड्रग वाला तो बाद में मांगेगा, एक्ट वाला कोई मांगेगा कोई नहीं मांगेगा। जिसको जितनी समझ होगी वो उस हिसाब से आपसे क्वेरी करेगा और आपको देना पड़ेगा। और अल्टीमेट जब आपको मार्केट करेंगे तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो ये क्वेश्चन वो करने वाला है। पहले तो जो दवाई बनाएंगे तो ड्रग कंट्रोलर करेगा, ड्रग का पैनल करेगा। लेकिन जब मरीज के पास जाएगी तो वो क्वेश्चन डॉक्टर करेगा कि इसमें ये रेशनल आपने क्यों लिया। तो जो भी जो घटक होने चाहिए वो हमारे त्रिदोष के आधार पर, त्रिगुण के आधार पर, पंच महाभूत के आधार पर वो स्वतः सिद्ध होने चाहिए कि हमने इस ड्रग को इस कारण से लेना है। फिर क्या है कि हम किस मात्रा में लेना है, कितना लेना है। तो किस मात्रा में लेने के लिए एक रेशनल है, एक पर्टिकुलर किस दोष को हमने कम ज्यादा करना है, उस दोष के अंशांश कल्पना और रेशनल के हिसाब से हमने उसकी मात्रा को डिफाइन करना है, उसके घटक को डिफाइन करना है। फिर कैसे बनाना है, फिर क्वेश्चन आता है कैसे बनाना है, औषधि कैसे बनाना है। तो औषधि कैसे बनाना है, इसके लिए प्रोसेस डेवलपमेंट चलता है। हमारे ट्रेडिशनल जो है औषधि बनाने के लिए रसशास्त्र में बेसिक कल्पनाएं थी। पंच कषाय कल्पना, पंच कषाय कल्पना जिसमें कि सोरस है, जिसमें कि कल्क है, जिसमें कि क्वाथ है, हेम है, फांट है। इन्हीं से व्युत्पन्न कल्पनाएं बनी। इन्हीं से गुकुल, बटी, तेल, अवले, पाक इत्यादि विभिन्न कल्पनाएं, धूपम इत्यादि बनी। इसके बाद फर्दर टैबलेट, कैप्सूल, लेप, कॉस्मेटिक, बहुत सारी कल्पनाओं का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें औषधि कैसे बनानी है, ये प्रोसेस डेवलपमेंट है। तो ये भी डेवलपमेंट का विषय है। लेकिन जो हमें कैसे बनानी है ये मन मर्जी नहीं चलेगी। इसमें हमारे डेवलपमेंट के पीछे हमारी आयुर्वेदिक विद्या जो है, रसशास्त्र और भेषज कल्पना, एक हमारा आधार ग्रंथ है। फिर कैसे देना है, अभी जैसे बॉस ने कहा, हमारे अनिल शुक्ला बॉस ने, जैसे एक मंडल होता है तो एक मंडल 42 दिन का होता है, 42 डेज का। तो हमने कोई औषधि को कितने दिन तक देना है, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, जिंदगी भर तो कोई दवाई नहीं चलेगी। तो उसको भी एक हमने विचार करना है। और फिर आता है कि हमने प्रोडक्ट बना दिया, बनाने के बाद उसको प्रोटोकॉल बनाया, प्रोटोकॉल को हमने क्वालिटी कंट्रोल करा, उसको मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से उसकी ऑर्बिटल की कोगनोसी करी। इसके बाद उसकी फाइटोकेमिस्ट्री करी, उसका हमने केमिकल फिजिको केमिकल एनालिसिस करा, उसकी सेफ्टी स्टडी करी, उसके एफ्लाटॉक्सिन करे, उसके हैवी मेटल्स करे, उसका जो है हमने पूरा फिंगर प्रिंटिंग करी, टीएलसी फिंगर प्रिंटिंग करके कंप्रेहेंसिव हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया। उस प्रोटोकॉल को आयुर्वेदिक पैरामीटर के हिसाब से, चाहे तेल परीक्षा हो, चाहे जो है अवलेह परीक्षा हो, या जो भी परीक्षा आयुर्वेद में वर्णित है,
नो आयुष दादाजी। और लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं सर? मैं देख रहा हूँ आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। झाजी भी ज्वाइन हो चुके हैं तो प्रणाम झाजी। इसका मतलब लिंक तो काम कर रही है। स्वागतम स्वागतम। चारों ग्रुप में भेजी तुमने लिंक? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर? जी। बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे। यार जूम ने दगा दे दिया सर, क्षमा चाहता हूँ। 5 मिनट 7 मिनट स्ट्रगल किए हैं जुड़ने में, थोड़ा सा लेट जी सर। जुड़े, इसीलिए लेट हुआ। जी सर, जी सर। वही लिंक। तो उसी लिंक में दो, फिर आगे वाली लिंक दोबारा दे दो। प्लीज ज्वाइन विद दिस लिंक। वेलकम विष्णु प्रिया जी, वेलकम। फिर आवाज फिर गई। आवाज आ रही है सर आपकी? क्लियर आवाज आ हाँ, रही है? अभी आ रही है फिर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। विष्णु प्रिया जी नमस्कार, स्वागतम स्वागतम। जगदीश्वर जी स्वागतम। आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरफेरेंस। नमस्कार नमस्कार सर। Something indication was there on the screen that this free meeting ended करके। हाँ, वो फ्री 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है सर, तब ये प्रॉब्लम जा रही है। चलिए चारों ये जूम वालों पे कोई केस भी नहीं किया जा सकता। I am extremely sorry मदन सर। वेलकम। आ गया जी। हाँ मदन जी आ गए। वेलकम वेलकम वेलकम। लगता है सारा पता नहीं क्या, कोई नहीं, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ हो रहा जी। जहाँ साहब आपने जो बताया बात जी, हमें अगर एफिकेसी उस तरफ भी देखना, मतलब वो स्वस्थ वृत्त की जो है उस तरफ भी अगर देखना हो, कुछ और चाहिए इसके लिए। ये तो औषधि वाली खेल चल रहा अभी। नहीं देखें, इसमें शुरू से अगर चलते हैं तो ड्रग तो एक पक्ष हो गया, बिल्कुल जी। उपयोग उसका दूसरा पक्ष है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल उपयोग करना जो है वो चिकित्सक जानता है। बिल्कुल जी। अगर पूरा क्वालिफाइड चिकित्सक है हाँ तो जी, कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सारी चीजें चिकित्सक जानता है और वो उसका लाभ लेता है। बिल्कुल। लेकिन वही है कि जो हम दे रहे हैं मेडिसिन, वो कितना सही है अपनी जगह पे,
आज हालत यही है कि स्पूरियस और क्या कहते बिल्कुल, हैं वो हाँ जी। सब्स्टिट्यूट और क्या क्या क्या, मतलब ये सारी समस्याएं ऐसी हैं कि अब कई बार हम दवा लिखते हैं, हाँ जी, जैसे हमने लिख दिया कि स्वर्ण बसंत मालती, हाँ जी, बसंत कुसुमाकर, हाँ हाँ जी, सारे कॉस्टली आइटम्स इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन लिखने के लिए मैंने लिख दिया, पेशेंट को क्या मिला वो भगवान भरोसे, एक तरह से सही बता रहा हूँ। हाँ तो जी, कई हाँ बार जी, चूंकि चूंकि भाई हम तो द्रव्य है, देखें द्रव्य जो है मटेरियल बिना प्रॉपर्टी के नहीं होता है, बिल्कुल जी, बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता है। बिल्कुल जी, तो द्रव्य है तो उसमें गुण होना चाहिए, स्वर्ण अगर है वहां पर तो स्वर्ण की प्रॉपर्टी होगी, रजत है तो रजत की प्रॉपर्टी होगी। अब रहा कि भाई स्वर्ण भी सही तरह से वहां पर यूज किया गया है कि नहीं, स्वर्ण की प्रोसेसिंग सही हुई कि नहीं, रजत की प्रोसेसिंग, ताम्र की प्रोसेसिंग सही हुई कि नहीं। बिल्कुल एक जी, सिंपल सा आरोग्य वर्धनी है, हाँ जी, आरोग्य वर्धनी बट्टी आप इंक्वायर करेंगे तो बड़ी, कई बार आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी और ये होंगे, उसमें ताम्र भस्म सबसे पोटेंट मटेरियल है, और दूसरा जो प्लांट मटेरियल है उसमें कुटकी सबसे मेजर पार्ट है। हाँ जी, तो अगर आपने आरोग्य वर्धनी किसी को खिलाया, अच्छा वैसे कुष्ठ अधिकार का वो है, रसरत्न समुच्चय ने उसको सबसे पहले अपने पुस्तक में स्थान दिया, उसी ने इन्वेंट किया, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम आरोग्य वर्धनी की 2 गोली किसी को खिला देते हैं, बल्कि हमारे प्रोफेसर शुक्ला जी जामनगर में प्रोफेसर थे, सीपी शुक्ल, वेरी रिनाउंड फिजिशियन थे, वो एक बड़ा मतलब एक तरह से बराबर प्लीड करते थे कि आरोग्य वर्धनी की बड़ी मात्रा हमें रेचन के लिए देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत छोटी मात्रा में भी बढ़िया रेचन करता है। और आज की स्थिति है कि हम आरोग्य वर्धनी खिलावें और कहीं से हमको रेचन जैसा कोई इफेक्ट नहीं मिलता है, तो हम कहाँ किसको दोष देंगे, ताम्र की सही प्रोसेसिंग नहीं हुई, या हमने क्या कहते हैं जितना उसमें कुटकी और सही स्पेसीज कुटकी डलना चाहिए, बिल्कुल, या मतलब बिल्कुल वो क्या कहते हैं स्पॉइल कुटकी डाला। देखें बिल्कुल, बाजार की स्थिति ये है कि जो विक्रेता है कुटकी का, वो जब तक उसके धूल धूल को नहीं बेच लेगा वो नहीं मानेगा क्या, और आप अगर लेने वाले हैं, अलर्ट नहीं है, नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आप वही धूल खिलाएंगे सामने वाले को। बिल्कुल, तो ये सारी समस्याएं हैं, और इन चीजों को, सवाल यही है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो हर स्टेप पर इंस्ट्रक्शन सारे के सारे हैं, फॉलो कितना वो वहां पर कर रहा है, सवाल इस बात का है। अगर सही तरह से फॉलो हो तो पोटेंसी उसकी या इफिकेसी जो है वो तो, और ड्रग में 2 ही चीजें हम लोग, इफिकेसी है और सेफ्टी, ये 2 चीज देखना सबसे आवश्यक होता है। और अगर सही द्रव्य है तो मैं बता रहा हूँ कि उसका गुण तो मिलेगा ही मिलेगा, हरित पवन की जी की, डालेंगे तो। डॉक्टर साहब पवन जी की तरह सुने, पवन जी 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 आपकी तरफ पवन से जी, भी सुने जी थोड़ा सा इसके ऊपर, जो झा साहब ने जो उठाया बात। पवन जी सुनाई नहीं दे रहे हैं? साहब पवन का जी, कहना हाँ बिल्कुल जी, हाँ आवाज। सही डायरेक्शन में है। आज 2 आयुर्वेद चल रहे हैं, एक वैद्य आयुर्वेद और एक इंडस्ट्री आयुर्वेद, हम्म, दोनों बड़े पैरेलल हैं, दोनों अलग अलग हैं। और एक तीसरा आयुर्वेद और है, L2 आयुर्वेद, L1 और L2 मीन्स, आज यदि हम क्वालिटी की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, कि जो गवर्नमेंट में क्वालिटी जाती है वो चूंकि वो कॉस्ट कॉन्शियस होती है और हमेशा लोएस्ट कोटेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, तो वहां क्वालिटी की बात ही करना उचित नहीं है। वहां पे तो मालूम पड़ता है कि घोल के पीस के घोंट के कुछ भी दे दिया और गवर्नमेंट का टेंडर पूरा किया। मैं इस पॉइंट को सबसे पहले उठाने पे क्यों बाध्य हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो गरीब जनता है और जो मैक्सिमम गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज है आयुर्वेद की, वो ये दवाइयां फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये बात अलग है कि हाँ PHU में, जामनगर में जिनकी खुद की फार्मेसी है
उसमें ऐसी चीज नहीं होती, अदरवाइज वहां क्वालिटी की बात करना उचित है। नंबर सेकेंड, मैं काफी सर दिनों तक बीएचयू फार्मेसी देख रहा था, तो मैंने एक कर लिया था कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लोएस्ट प्राइस वाले को हम नहीं लेंगे अगर क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी बेसिस पर ड्रग परचेज करना ये हमने बना रखा था, वही फॉलो करते थे। आगे बढ़े जी प्रमोद सर, जी सर। सॉरी जिन इंस्टीट्यूट्स सॉरी की टू है वो इंटरप्ट तो ठीक है सर, जिन इंस्टीट्यूट की नहीं है, समझ लो एक भोपाल डायरेक्टरेट खरीदती है पूरी वो डिस्पेंसरीज के लिए, क्लिनिक्स के लिए, तो वो सब क्वालिटी की बात वहां पे गौण हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां कॉस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट प्लस कमीशन, ये दो चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मैक्सिमम समझ लीजिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का 60% कंप्राइज करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल 60% है वो, मतलब आदमी जेब से पैसा निकाल के खरीदने जो जाता है उसके अलावा इतना और चला जाता है वो। तो ये हमको सबसे पहले गौर करनी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दूसरी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप को यूं फील करती है कि हम यदि कहीं प्रूफ ऑफ एफिकेसी में जाएं, आज हमारी क्लिनिकल रिसर्च प्रूफ ऑफ एफिकेसी की है, तो प्रूफ ऑफ एफिकेसी वहां चाहिए जहां हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है और हमने दो कंडीशंस को वायलेट किया है गवर्नमेंट की, तो हमको प्रूफ ऑफ एफिकेसी लगेगी। व्हाट आर दोज कंडीशंस ऑफ वायलेशन? नंबर वन, दैट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट। आपने जो भी बनाया, जो भी रिसर्च किया, यदि वो क्लासिकल टेक्स्ट के डिफरेंट है, नंबर एक, तो आपको वो इथिकल माना जाएगा और उसकी प्रूफ ऑफ एफिकेसी लगेगी, चाहे आपने एक भी इंग्रेडिएंट इधर से उधर क्यों ना किया हो। नंबर वन। नंबर सेकेंड, यदि हम देखते हैं कि जहां पर वो प्रूफ ऑफ एफिकेसी मांगा है, वहां पर यदि प्रोडक्ट भी आपने सेम रखा, सपोज सितोपलादी चूर्ण है, सितोपलादी चूर्ण इज मेंट फॉर अपर चेस्ट, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब आप कह रहे हो कि सितोपलादी चूर्ण सपोज एफ्रोडाइसियक है, if you have changed the ingredient or if you have changed the indication. So ingredient and indication, if both have been changed, then only proof of efficacy is desired by the government. But for the marketing persons, it is extremely desired to communicate their betterness in front of competitors' product. Our is better. Where this our is better unique selling proposition, USP, comes into the picture, there definitely industrialists would like to have clinical research report or proof of efficacy to say our product is being liked by so many doctors, so many patients, so many volunteers. Like this, various type of researches are there, maybe survey, maybe researches, but proof of efficacy is desired when we are differentiating ourselves, when we are producing exclusive product for us, ethical product for us, then only proof of efficacy is required. Chyawanprash. If classical Chyawanprash will be made, sir, believe me, we will not take it. Leave other persons, leave consumers. Chyawanprash is a bitter thing. Chyawanprash was meant with a concept for reducing the bitterness of those respiratory tonics with good, with these mishri, etc., etc. But that was never chutney. Chyawanprash was never chutney. But fortunately or unfortunately, that has been promoted as a chutney by various manufacturers for immunity. Chyawanprash was meant for upper respiratory disorders, particularly for Rajeev. We have missed that. We are not promoting Chyawanprash for Rajeev. We are promoting Chyawanprash on bread, and that consistency cannot come in original Chyawanprash prepared on classical
parameters, because that will not pass through any pipe and that production will be difficult. So this is my humble suggestion. If you kindly permit, Anil Shukla ji has joined. Anil ji, would you like to say something? Pawan Or ji, please, yes sir, yes, please. Sir, I missed in between. Sorry, I can't hear, so I can't comment anything right now. I will listen, and if anything I have to comment, then I will comment. Thank you. Yes. Anil ji, पवन जी, आपने जो L1, L2 की बात जो बताया जी, उससे थोड़ा और बताना जी इसके ऊपर। मैं कुरेले जी के बाद बताऊंगा सर। कुरेले जी आ गए। कुरेले जी, चलो। स्वागतम, स्वागतम। राजीव जी, नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्ते सर। सॉरी, नमस्ते। बीच में मैं नहीं पाया। कोई नहीं। तो अभी मैं आवाज में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? मैं मार्केट में हूँ। कोई नहीं जी, we can listen to you. हाँ जी, तो फिर जो बात जो मैं ब्रेक हो गई थी वहीं से शुरू करता हूँ। फिर आता है कि हम जो हमने एक अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसको इन हाउस हमने अपने जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर ऑफ सेफ्टी, पैरामीटर ऑफ क्वालिटी, इन प्रोसेस कंट्रोल, टिपिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर हमने जब प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर उसकी डोजिंग पे आते हैं। उसके जो है प्रोडक्ट को हम एक बार बना लेते हैं। बनाने के बाद उसको एक आइडियल तरीका ये है उसको कि हमने कोई भी अनुभूत करने से पहले उसको एक छोटे स्केल पे डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। वैसे प्राचीन काल में बहुत अच्छी पद्धति थी। प्राचीन काल में क्या किया जाता था कि कोई भी चाहे भोजन बनाए या कुछ भी करें, पहले अग्नि देवता को समर्पित करते थे, तदोपरांत जीव जंतुओं को खिलाने का विधान था। इसके बाद फिर जो है स्वयं लिया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं ये फिजिकल टेस्टिंग से लेके एनिमल टेस्टिंग और फिर कहीं ना कहीं ये हमारे ह्यूमन ट्रायल के लिए ये द्योतक है। तो इसी सिस्टम के आधार पर हमें कोई भी नया ड्रग बनाना है तो सबसे पहले हमें एक अनुभूत करना है उसको व्यक्तिगत स्केल पर। अगर हम चिकित्सक हैं और एक प्रोटोटाइप स्टडी के आधार पर उसको, अगर हम चिकित्सक नहीं है तो किसी चिकित्सक को देकर, तो 20-30% का जब इनिशियल डाटा अपने पास आ जाता है तो फिर हमने एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस प्रूफ ऑफ एफिकेसी को फर्दर ऑफिशियल तरीके से ऑथराइज करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए हम स्वयं अथवा सीआरओ की मदद से एक हम वेल डिजाइन क्लिनिकल ट्रायल, वो ओपन भी हो सकता है, वो ब्लाइंड भी हो सकता है, वो कंट्रोल्ड भी हो सकता है, वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, वो हमारी नीड और हमारी क्षमता और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन उसको हमने ऑफिशियल तरीके से CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया के यहाँ से रजिस्टर्ड कराकर प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल से पहले उसकी एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेकर उस प्रोडक्ट को हमने जाना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये इस प्रोसेस के द्वारा हमारे पवन शर्मा जी बताएंगे कि गुड क्लिनिकल ट्रायल प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या अप्रूवल लिए जाते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। एक विशेष रूप से विशेष बात है इन्फॉर्म कंसेंट। तो इन्फॉर्म कंसेंट के द्वारा इसमें फिर हम एक स्पॉन्सर होता है जो कि सारी की लाइबिलिटी से लेके सब चीज़ों के लिए जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है उसमें। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, हमारे स्पॉन्सर होते हैं, हमारे ट्रायल मल्टी सेंट्रिक होते हैं, सेमी सेंट्रिक होते हैं, यूनी सेंट्रिक होते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो ट्रायल्स होते हैं तो उनकी डिजाइन हमारी क्षमता और नीड के हिसाब से बनती है। लेकिन इन सब का पर्पज है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको साइंटिफिक वैलिडेशन कर देना, अपनी बात को सिद्ध कर देना। तो ये प्रूफ ऑफ एफिकेसी एक चिकित्सक के स्तर से भी हो सकती है, एक चिकित्सक कई चिकित्सक भी करके कर सकते हैं, लेकिन उसको जब हम भारतीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से करते हैं तो वो साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाते हैं। तो आज की डेट में ड्रग को जब हम औषधि के ड्रग के रूप में सारी दुनिया में बढ़ते हैं, जहाँ पर WHO का कंसेप्ट है वन ड्रग वन क्वालिटी, तो उसके लिए हमने प्रूफ ऑफ एफिकेसी को एक एस्टेब्लिश करने के लिए सारी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, चाहे वो QA की हो, QA की, QC की हो, GMP की हो, या जो भी WHO ने हर चीज़ के लिए गाइडलाइन दी है, तो इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को हम डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं और उसको फिर हम
इन सब से जब लैस हो जाते हैं, इन सब से जब हम संयुक्त हो जाते हैं, तब हम इन्फोर्समेंट में उन डाटा को सबमिट करते हैं। तो इन्फोर्समेंट की जो कमेटी है, टेक्निकल स्टेट कमेटी, वो उसकी अनुशंसा करती है, रिजेक्ट करती है, या कोई क्वेरी होती है तो उस क्वेरी का आपसे जवाब मांगती है। उस क्वेरी पे अगर स्टेट टेक्निकल पैनल अगर संतुष्ट हो जाता है तो आपको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस देने के बाद आप फर्दर फेज 3 फेज 4 ट्रायल में आप जा सकते हैं, उसकी फर्दर फार्माकोविजिलेंस के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि लेकिन इन सब का उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं लाइफ बहुत प्रीशियस है। लाइफ का सारा सिस्टम एक हमारे डॉक्टर्स के हाथ में है, और कहीं चूक ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं पे कोई एरर ना हो जाए, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य है। इसीलिए इसको सेफ्टी के हिसाब से, इसको एफिकेसी के हिसाब से, इसको क्वालिटी के हिसाब से एस्टेब्लिश करते हुए हम बनाते हैं, और इस सब के लिए प्रूफ ऑफ एफिकेसी की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट पवन जी, शायद आपसे भी थोड़ा सुने जी, वो आपने जो बताया इसमें पवन जी एक चीज जो निकल आ रहा है कि देयर इज अ रियलाइजेशन, थोड़ा सा समझ आ रहा लोगों की कि देयर इज अ नीड फॉर स्टैंडर्ड्स, बट इट इज नॉट स्टिल क्लियर हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड व्हाट दोस स्टैंडर्ड्स शुड बी। थोड़ा सा है, बट इट इज नॉट गुड इनफ। With your kind permission, I would like to start, sir. If link will be ended, kindly rejoin. That is today's problem. We will sort out it up to tomorrow. First of all, if we would like to say about something about quality, first of all, before clinical research or proof of efficacy, every owner or every manufacturer is very serious that his crores of rupees will not be wasted if that quality is not up to the mark. So standardization plays important role before proof of efficacy. So standardization and quality evaluation of herbs are generally based on microscopic, microbial, additional chemical, biological, physical, and organoleptic parameters. Various parameters are there. I would not like to go to detail because that separate series we will be conducting various webinars on this industry supportive topics. So, in standardization, if we should talk about holistic drug standardization, raw material, process, quality control, packaging, toxicity, clinical, these are the standardization here. And the manufacturer is divided by the good clinical practices, good manufacturer practices, good laboratory practices, good storage practices, good distribution practices, good repository practices, and the licensing. Licensing again, licensing. HACCP, MRA, DO, Drug and Objectionable Advertisement Act, or Magical that Remedy Act, that particular act is really hurting Ayurveda in various manners because that was meant for allopathy. And the same is being followed by Ayurveda when we can treat various of those disorders which are mentioned in Magical Remedies Act. So now I would like to come to the direct point. How to conduct proof of efficacy for Ayush industry? Prerequisites. What are required? Number one, product. First of all, because we are going to conduct clinical research of the product, so product is definitely required. Formulation, the category of that formulation, whether it is classical, proprietary, herbal, Saundarya Prasadhak, that new category, and Poshak.
So these categories are now classified by the government. Standardization, as I told you, physical, organoleptic, that I am not going to detail. Documentation for evidences. Because without evidences, drug control will not approve the licensing. So references in the text. Text means books mentioned in Schedule 1 of Drug and Cosmetic Act 1940. Those books, particularly 57 books total, including Ayurvedic formulary, Ayurvedic pharmacopoeia recently has been included in that. Otherwise, those books are very essential to give reference to the drug control for that particular product. Application to drug control, self, third party, loan license, various methods are given there, and government is helping there to produce the quality products. Then next, sampling for clinical research. Then investigator. Product is ready. We have the product ready according to the GCP norms. We have labeled it according to the trial norms. Before that, we have to select one investigator. Who is the suitable investigator? Who has the patient OPD or patient footfall in his personal clinic related to that topic, related to that product particularly. So identification is very important. Then with the mutual consent, protocol, consent and other documentation will be prepared. Finalization of CT parameters, protocol will be finalized. Clinic and interview system with patients. Spare time, if doctor has spare time for documentation, that is suitable. Otherwise, roaring practitioners are not definitely suitable for the clinical research or proof of efficacy, as they don't have time even to fill the CRF, and the juniors are filling CRF at randomly. Then finalization of objective investigations. What investigations will be required for our proof of efficacy? Then we have finalized the investigations with consent of investigator. Then laboratories. Third is laboratory. Authentic laboratory, NABL or ISO or any other government recognition for that particular pathology lab. We are not talking about laboratories which are involved in pharma research before production or quality control. So then visit to observed facility and system. When we are investing money, we should see the laboratory working and how they are working. The reports are genuine or not, their home collection system, everything definitely we should take consideration of that. Then financial dealing, home collection capability, in timing reporting, and equipment at home testing. Because bone testing, bone marrow testing, the equipment can come to the home. Blood pressure, again, I have circulated the link. Please rejoin, because this is again indicating the 10 minutes. So I am completing my lecture in 10 minutes, don't worry. So this is the third prerequisite. Then trial coordinators, because doctors don't have time for that. So particularly their training, their facilities, institute, place, plan, literate, capable for documentation, reporting system, everything has to be planned. Then volunteers or patient, because it is most important tool in any proof of efficacy or severe clinical research, maybe phase 3, phase 4, phase 5, any phase, but patient is most important. And government has taken care of the benefits of the patient also through insurance also. Then ICF in local language, patient expenses, insurance company, statistics of those patients in demography, these are required. How to start? For manufacturer,
Financial dealing, finalization with doctor, lab, patient, expert, trial coordinators. Everything has to be finalized in terms of money, cash or kind, whatever it may be. Proper documentations, correspondence, recording, application to ethics committee. I am also member secretary of the CDSCO approved ethics committee, Independent Ethics Committee, Clinical Research India, which is constituted by our Independent Research Ethics Society. So after approval of ethics committee, CTRI registration comes in the picture by investigator. If CTRI registration has been done, then we can start the proof of efficacy or clinical research, whatever it may be. Then we can start patient coordination, dispensing of medicine and record, patient information sheet, informed consent form, case record form. We can start distributing that and filling that. How to manage? CRF recording, regular visits, smooth funding and payments, report writing start, product literary review. I am sorry, this renew is written. Product literary review, toxicity study, if any, is required. If we have, they have incorporated any toxin or any bish or upabish, we should go for toxicity study also. And dispensing and empty bottle collection is also important, that actually that patient has consumed medicine or not. Post-trial action, collection of CRF, patient information sheet is not required, then ICF, collection of lab reports, computation of clinical data, statistical analysis, scientific reporting, summary. Then if report is made, research paper, publication in PR review journal, submission to ethics committee, submission to drug control of requisites, communication to membership of desired importance, communication of objectionable advertisement act and remedies act, if it is there any. Thank you. Thank you very much. If this link is disconnected, please join again. Madan sir. Dr. Madan Thangvelu sir. Agniotri sir. Madan Thangvelu sir. Pawanji, thank you. Sorry, right. I'm sorry, I went too fast. Thank you for elaborating, Pawanji. You have touched on very important points. There is a big space through which we are working here, Pawanji. Starting with product, quality assurance of the product, before it can come to a trial, before it can show efficacy. And this, to me, I have only one objection here, that this whole exercise is going to make at least the Aushadhi side of Ayurveda and the Aushadhi related aspects of Ayurveda extremely expensive. So this is one difficulty. And I don't think we have a correct way to measure any of those parameters that will be consistent with Ayurvedic parameters. If you are doing simple Dashamul and you want to measure Vatshamak effect or Pitshamak effect or Kapha-shamak effect, how are you going to do this? I hope my question is correct. Ek to hai, okay, this is, our meeting has been upgraded now, so we can continue without any problems. So the question here is, how will we arrive at efficacy measurement that is consistent with the Ayurvedic description for each dravya? I don't know if I want to put this question here to the floor. Yes, Nadanji. Hanji. I would like to add in this. There are two components. One is medicine, another is patient. So medicine part, what I earlier said, that if material is there,
property will be certainly there. Without property, it cannot be. बिल्कुल हाँ, जी, ये material. हाँ जी, कहते हैं कि भाई द्रव्य, हाँ जी, तो बिना गुण के द्रव्य नहीं होता है। बिल्कुल जी, और गुण कब नहीं होगा, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है कि भाई अगर स्पॉइल्ड है, पुराना है, हाँ जी, क्या वो गलत, इंसेक्ट और इन सब से बिल्कुल मतलब स्पॉइल है, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अदरवाइज if it is matured, if it is collected timely and used timely, then property will be there. Now, the second component is patient, where we are going to apply it. So first, medicinal part, the component of medicine, we should confirm the its property. That it has, जैसे मेडिसिन अपनी जगह पे पूरी तरह से दुरुस्त है, बिल्कुल वो जी, फुल्ली जितने इंग्रेडिएंट्स उसमें होना चाहिए, जो उसमें क्वांटिटी होना चाहिए, और मतलब क्वांटिटी किस तरह से सेफ रहे प्रोसेस के समय में, ये सारी चीजें हमने अगर अच्छी तरह से फॉलो कर लिया, तो मेरा कहना यह है कि मेडिसिन जब हमने तैयार कर लिया किसी कंटेनर में, वो फुल्ली, तो जैसे शुरू में ही सिंगल ड्रग के लिए कहा है कि क्या बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना संपत् चेति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, ये तो द्रव्य के लिए कहा। और वही चीज हम जब प्रिपेयर्ड हो जाता है, वो किसी फॉर्म में, किसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन ओनली, अब जैसे मटेरियल है, चूर्ण बनाने गए और पता चला कि चूर्ण बनाते बनाते उसकी प्रॉपर्टी को ही हमने किल कर दिया। बिल्कुल जी, कितने तेज क्या वो आरपीएम और रोटेशन पर हमने पाउडर किया कि पता चला कि उसकी बहुत सारी चीजें जल गई, बर्न हो गई। बिल्कुल जी, तो ऐसा नहीं, मतलब ड्रग का जो पार्ट है अपनी जगह पर वो फुल्ली एकदम, वो कहते हैं कि संपत् चेति चतुष्कोयम, तो ये चार चीजें द्रव्य में, तो वही ये सारी चीजें द्रव्य है, तो उसमें ये होना चाहिए, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म हो, किसी डोजेज फॉर्म में। दूसरा पार्ट अब पेशेंट का है कि हम सही जगह पर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमने गलत जगह पर, और उसमें जब हम डिजीज का विचार करते हैं, तो ऑटोमेटिक दोस्त ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं, और बिना उसके ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हो सकता है। डिजीज को डिसाइड करना है, तो वहां पर किस दोष से, और दोष के भी मतलब जो अंशांश कल्पना वाली बात है, वो सारा का सारा चिकित्सक विचार कर लेता है कि डायरिया है तो क्या है, पित्त से होने वाली अलग अलग व्याधियां हैं, डायरिया भी पित्त से होगा, क्या कहते हैं, अम्ल पित्त भी पित्त से होगा, रक्त पित्त भी पित्त से होगा। तो फिजिशियन जो है ये डिजीज को, अपना पित्त के पर्टिकुलर स्टेज को या फॉर्म को समझ लेता है कि पित्त के किस गुण के बढ़ने से डायरिया हो गया, और किस गुण के बढ़ने से अम्ल पित्त हो गया, और किस गुण के, तो इस तरह से वो फिर ड्रग चूज करेगा कि हम पित्त के किस गुण को ट्रीट कर रहे हैं, तो कौन सा ड्रग वहां पर। तो ये सारी चीजें ये चिकित्सक के जुरिस्डिक्शन का है, और वो विचार कर लेता है। रहा खाली, मैं तो कहता हूं कि ड्रग वाले पार्ट को इट शुड बी पोटेंट, उसमें कहीं बेईमानी शैतानी नहीं होनी चाहिए। अगर चिकित्सक के सामने वो ड्रग जा रहा है, या चिकित्सक प्रिस्क्राइब कर रहा है मार्केट से वो लेने के लिए पेशेंट को, तो पेशेंट का खाली पॉकेट खाली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विथ फुल पोटेंसी ड्रग उसको मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अब पोटेंसी को कैसे निश्चित करना, तो ये तो सारे जो फार्माकोडायनेमिक्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, दीज आर द वे टू एसेस द इट्स पोटेंसी, इट्स क्या कहते हैं, इफिकेसी। तो ये सब काफी चर्चा बराबर हो रही है। डॉक्टर साहब, हमें ये दिखाई दे रहा है कि आयुर्वेद इज नॉट फॉर गुंडागर्दी, खत्म। सही बात है, बिल्कुल। आयुर्वेद को मैं तो कहता हूं कि इसको जैसे ये जो बिगर इंडस्ट्री में ड्रग को डाल दिया है, उसको एकदम डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स हों जो एक कम्युनिटी, एक एरिया को कवर करता। अब ठीक है कि चूंकि चिकित्सक ने कंसंट्रेशन एकदम से डायग्नोसिस और क्या प्रिस्क्राइब करने पर कर दिया, उसको ड्रग नहीं बनाना है। ड्रग बनाने वाले पार्ट पर जरा भी उसको कंसंट्रेट नहीं करना है। और आजकल जो आ रहे हैं भाई, जो
सारे टैबलेट्स आ रहे हैं, कैप्सूल्स आ रहे हैं, व्हाट दे आर। तो मोस्टली देयर क्या कहते हैं वो अरे एक्सट्रैक्ट हैं। तो एक्सट्रैक्ट जब हैं तो सारा खेल ही बदल गया है वहां पर। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल क्या करेंगे भाई? अश्वगंधा को आप ले रहे हैं तो आपका बिल्कुल पैरामीटर हो गया कि बिथेनिया सोमनीफेरा, बिथेनिन इज देयर और नॉट इन सर्टेन परसेंटेज। इफ इट इज नॉट देयर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड। तो Sir, the ये point, चीज yes, sir, the point you are raising is very, very important. शायद हम सुने जी थोड़ा सा इसके ऊपर जो आपने जो बताया कि the manufacturing must be decentralized. This must come to smaller scale, region wise. सुने जी शायद पवन जी से कुछ है। Yes, yes. पवन जी Here I would like to say पवन something, जी sir. एक चीज और आपने जो L1, L2 के बारे में जो बताया उसको भी थोड़ा सुनाइए। Government purchases are depend on L1 and L2, sir. अच्छा, Suppose they have received 10 or 20 quotations. Once first they finalize technical bids, whether all licenses are there or not. Then they finalize commercial bids. Commercial bids means L1 and L2. Suppose they have received 20 quotations. Out of that quotation, which is the lowest quotation, that should be approved according to government norms. अच्छा, So there is throat cutting, rate cutting competition is there for government vendors. And in that money, they can't produce good quality material that is well understood by government officials also. That is not there, sir. That is well understood by, suppose one example I am placing here. In West Bengal, they approved 9 rupees 50 paisa for 400 ml bottle of Asava, Draksha Sava. How one person can provide one glass bottle with 500 ml or 400 ml distilled water even up to the dispensary? It is very means quite impossible. So we objected there that what is there? 9 rupees 50 paisa for 400 or 500 ml Asav Arishta. It is the joke on Ayurveda because Asav Arishta 400 or 500 ml is available in 50 or 60 rupees for general quality conscious companies. Number one. Number second, sir, what sir told, in my experience, in West Bengal, we have more than 180 small scale manufacturers. Unfortunately, every person of quality control is on register basis. They are coming, they are signing the documents and they are going away. That they are not maintaining quality control. Number one. Top 20 or top 50 or top 100, we can say out of 10,000 companies, sir, they are well equipped, number one. They have their quality control and R&D system. So they are considering those expenses in their overhead expenses. Otherwise, 80% Ayurvedic industry is not interested to have regular quality control of each and every batch, which should be done absolutely. And that is being maintained because big companies can spend and invest on the R&D and quality control. So they are investing. Top 100, we can take top 100. We can definitely write from the bill of material. Bill of material means what material is being incorporated in that particular batch. That is also mentioned and that will be accepted after quality control seal that it has been verified by the quality control parameters, and that raw material or packing material, whatever it may be, it is up to the mark, and then only they can use. Because I was in Jandu and Imami for so long association, we can't do it. Association will take objection. What are you doing? You have made these norms, SOPs. So we are bound of our SOPs. So in my opinion, my humble request is this: a small unit will definitely, if that is being run by any Vaidya, that is a different issue. Otherwise, small units will not take care of quality control or proof of efficacy.
because these are expensive strategies and small scale units are not considering it affordable. This is my humble request. This is it. Pawanji, here हाँ, my जवाहर साहब। submission is, sorry to interrupt, my submission is it should be on the pattern of IMCOPS or under the supervision of physician, those who are the actual user of the, hello, हाँ जी, मेरी आप बिल्कुल जो आ रहा है जी, आ रहा है। यूजर, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ. One of my student, he was actually searching some job. So I suggested him, why not you are a man of Rasas, why not you are starting some small manufacturing unit, and that will not need much more. So where you will consume, this will be your problem. तो मैंने उसको क्या सजेस्ट किया कि तुम जहां पर रह रहे हो अपने चारों तरफ एक देख लो कि तुम्हारे कितने बैचमेट्स हैं, तुम्हारे कितने और जानने वाले फ्रेंड्स हैं जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, उनकी क्या नीड है, उनकी नीड को तुम कलेक्ट करो और जितने भी मतलब हो सकता है कि उस पूरे नीड को तुम न पूरा करो, लेकिन उसका 50%, 60%, 70% अगर तुम पूरा कर सकते हो तो तुम उसको पूरा करो. उसको बताओ कि मैं तुमको जेन्युइन, स्टैंडर्ड और क्या कहते हैं इफिकेशियस प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा और मार्केट से वही थोड़ा सा चीपर भी प्रोवाइड करूंगा. मैं बता रहा हूं कि जिसको मैंने ये सजेस्ट किया उसने शुरू किया, नाउ इज अर्निंग गुड, क्या कहते हैं, बहुत पर मंथ खूब अच्छा खासा अर्निंग उसकी है और कम से कम 25-30 ऐसे फिजिशियंस हैं आयुर्वेद के जिनको वो अपना सप्लाई करता है. मैं इमकॉप्स का उदाहरण दिया, हालांकि इस समय इमकॉप्स की क्या पोजीशन में नहीं, लेकिन आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले मैं विजिट किया हूं और कई बार उस समय मैंने किया. वहां पर जो मैंने देखा कि ऐसे कोई अगर फिजिशियन चाहे कि मैं वहां से दवा ले लूं तो उसको दवा नहीं मिल सकता है, पहले उसका मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबर बनने के बाद फिर उसको दवा मिलेगी. तो जो प्रोडक्ट वहां का है वो चूंकि फिजिशियंस के द्वारा ही वो कंट्रोल्ड है. स्मॉल स्केल से कहने का मतलब ये नहीं कि फिर वही कि भाई चलो हमें सीतोपलादी सप्लाई करना है गवर्नमेंट सेक्टर को, चलो भाई उसमें जितना चीनी बढ़ा सको बढ़ा दो, 1 किलो चीनी बढ़ाओगे और 1 किलो सीतोपलादी का तुमको कॉस्ट मिलेगा. तो ये नहीं, मतलब इस तरह की बेईमानी शैतानी वाली बात नहीं. भाई हमें चिकित्सक हैं, भाई हमको रोग से फाइट करना है, तो रोग से फाइट बिना हम हथियार की कैसे करेंगे? द हथियार इज मेडिसिन. पवन जी, झा साहब की इसके ऊपर आपकी तरफ से कुछ है जी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर. 2 तरह के मैन्युफैक्चरर, देखिए बिल्कुल अलग सी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. नंबर 1 मेड फॉर गवर्नमेंट सप्लाई, number 2 made for Vaidyaj, sorry, third one is made for public. 3 types of manufacturers are there. Number 1 generally concentrate on government supply, and those industries generally remain operative with between March and July. In 4 months they will supply each and every tender quoted, so they will be free, and all earning of the year they will get within those 4 or 6 months. Number 1 category. Number 2 category is manufacturing for Vaidyaj. It is generally operated by Vaidyaj and for Vaidyaj, of Vaidya and for Vaidya. So those are limited to the bulk supply to the Vaidyaj, and those qualities are generally better than others in small scale industry because they are directly committed to the Vaidya, and Vaidya will definitely object if any quality disturbance they will observe. Number third is based on the wholesale market of every city, maybe London, maybe Calcutta, maybe Jharkhand, or maybe every city. Wholesale markets are there, sir. I am not talking about reputed companies, and I am not, because
how much penetration and reach those companies have. Generally, our basic health sciences or basic health manufacturing is dependent on these, because you will make any item. If your dealing is confirmed, they will take your item in 30% of the cost, and rest headache is of their wholesale marketing companies. So you will prepare, you will put 100 rupees MRP and you will sell directly to wholesale marketers. They will not need any quality. No need of any quality, because they have to sell those items in the rural area, semi-urban area, and they have grip on the market. And the rest of the manufacturing units are maintaining quality, bigger units generally. Yes, sir. जहाँ साहब से सुने जी, क्योंकि जहाँ साहब जी नहीं, मेरा वही है कि जो चिकित्सक के लिए फॉर चिकित्सक, हाँ, तो इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, क्योंकि दवा से कॉम्प्रोमाइज का मतलब भाई हम क्या कहते हैं, पेशेंट के साथ इंजस्टिस अगर हुआ तो सब बात खत्म है। इसलिए आप सोचिए ना गुरुदेव, आप सोचिए L1 के होते हुए इतनी कम क्वालिटी। नहीं, मैं सर सारी आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, आपकी बातों से जी। नहीं, उसमें भी अपना आयुर्वेद चमत्कार दिखा रहा है सर। यदि क्वालिटी मेडिसिन होती तो कितना चमत्कार दिखाता। मैं तो ये कह रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब हमारे साथ है जी आज नम्रता जी है BHU से। नम्रता जी नमस्कार जी। नम्रता जी, thank you for joining us today. Please tell us a little more. Is ये तो वेलकम नम्रता जी। नमस्ते जी, नमस्कार। This is a very difficult situation. आज जो डिबेट जो चल रहा है जी, it is a very difficult one कि efficacy कैसे मापें, और even before we can come to efficacy, how can we understand the standards? And it seems like we are in a very difficult position. And आपसे सुने जी नमस्ते जी, thank you for joining us. Sir, I have just joined the discussion, and from the discussion what I came to know that there are two say for large, sir is talking about, that is for small scale production, you can say. नमस्ते जी, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। Sir, actually I'm in airport, sir. Thank you. Shall I Namaste continue? Ji, what we will do, we will come back to you, Ji. Please. Okay, sir. Okay. Please stay with us, because you are listening. I want to see whether Anil Ji, Shukla Ji can contribute something, or Rajeev Ji or Anil Ji, just to add to this discussion. मेरी मन में ये आ रहा है साहब की ये तो बहुत कठिन समस्या है जी। देखें सर जी, कठिन तो कुछ, लेकिन वही है कि जब हम एकदम से कमाने के लिए उतर जाएं, हाँ जी, मार्केट में जो हम दे रहे हैं, और वही कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, क्वालिटी की बात ही नहीं करनी है। और इस तरह के सारे इतने केस हो चुके हैं। शिवराज सिंह केस इज वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, आज से 25 साल पहले की घटना। तो वो मैं सीधा ये मानता हूँ कि चिकित्सक और दवा, चिकित्सक फिजिशियन एंड मेडिसिन, ये ऐसा एक दोनों का रिलेशन है कि अगर हम मेडिसिन के साथ थोड़ा भी इनजस्टिस करते हैं, तो वो पूरा का पूरा हम आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए, आयुर्वेद को बिल्कुल क्या कहते हैं, उसमें जो अप्रतिष्ठा वाली बात करें, बिल्कुल जी। तो ये सारी नहीं। तो सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद, पवन जी ने अभी कहा ना कि सब चीज के बावजूद भी आयुर्वेद चमत्कार दिखा रहा है, और पूरा जेन्युइन हो, स्टैंडर्ड हो, सही तरह से सब बना हुआ हो, तब फिर क्या कहना है। तो सवाल वही है कि हम अगर दवा के साथ थोड़ा भी इधर उधर करते हैं,
और इफिकेसी नापने के लिए देखें, कम से कम अपने सर्विस पीरियड में हमने भस्मों से लेकर के और क्या कहते हैं ये जितने भी फार्मोमिनरल प्रोडक्ट्स हैं उनके इफिकेसी को हमने नापने की कोशिश किया, पैरामीटर डेवलप किया। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूँ, बंग भस्म को बल्ले कहा। हमारे यहाँ BL पांडे फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर, बड़े अच्छे रिनाउंड क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिस्ट, तो मैंने इनके सामने प्रॉब्लम रखा कि साहब बंग को बल्ले कहा है, नाउ हाउ वी कैन मेजर इट्स बल्ले प्रॉपर्टी ऑन एक्सपेरिमेंटल लेवल। उन्होंने कहा ठीक है, एक क्या कहते हैं आप किस एनिमल पर करना चाहते हैं, तो चलो अल्बिनो रैट्स पर करेंगे। तो कहा कि आप बिफोर आफ्टर इसको एक एक्सपेरिमेंट करो, उसको सीधा एक बाल्टी में पानी भर के उसमें छोड़ दो तैरने के, स्टॉप बाज से क्या कहते हैं स्टॉप बाज से उसको काउंट करो कि कितनी देर वो तैर रहा है, और एक ग्रुप बना लिया हमने। और फिर उसको बंग भस्म आप खिलाओ, 15 दिन खिलाओ, 20 दिन खिलाओ, 1 महीना खिलाओ, अब फिर उसको स्विमिंग कराओ, देखो उसके स्विमिंग टाइम में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो दैट विल प्रूव द इफिकेसी बल्ली इफिकेसी ऑफ द बंग भस्म। तो एक सिंपल सा ऐसा बताया। और वैसे जैसे हिपेटोप्रोटेक्टिव है, आरोग्यवर्धनी का हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, या क्या कहते हैं रस सिंदूर का हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, या मतलब जो और भी सारे एक्शंस हैं जैसे टेस्टिकुलर रीजनरेशन की बात है, या इस तरह के ढेर सारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को मतलब उस इफिकेसी को एसेस करने के लिए ढेर सारे फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स को हम लोगों ने लिया है और करके उसको एक क्या कहते हैं MD और PhD के रूप में उसको रखने का प्रयास किया है हम लोगों ने। तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैं, ऑन दैट मॉडल्स वी कैन एसेस द पर्टिकुलर इफिकेसी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसा वी आर वेरी हैप्पी, आज हमारे साथ है जी चेन्नई से कार्तिकेयन जी। कार्तिकेयन जी है जी, we can hear हाँ जी, कार्तिकेयन जी इज ENT सर्जन, मद्रास चेन्नई की स्टैनली मेडिकल कॉलेज से MD वगैरह किया। एंड कार्तिकेयन जी was also interested in सिद्ध मेडिसिन फ्रॉम तमिलनाडु, और कार्तिकेयन जी के पास काफी कुछ है सिद्ध मेडिसिन से, जो इसी द सेम कंफ्यूजन कि सिद्ध वालों की कैसे करें, हाउ डू यू टेस्ट द एफिकेसी। कार्तिकेयन जी नमस्कार। वणक्कम सर। Vanakkam, namaskar. Romba sandosham. Thank you for joining us today. This topic was very, very interesting. So because you also face the same problem when we look at Siddha formulations and efficacy of the formulations. Please, Karthikeyan ji, the floor is yours. Yeah, but the thing is, like my experience and exposure is slightly different from the discussion which is going on now. Because like it is all my medicines are used in-house, and then when I started, it was formulated by traditional family Siddha people, and then given to me to be used on the children with autism. So we kind of analyzed and then took ingredients and then tested on them, and then we test the individual components and then go for the thing, and then according to the topic, how to test the efficacy is more on the physiological markers. So we are definitely running short, or we are not up to the mark in doing laboratory efficacy and all that. But with the edible oil, the virgin coconut oil which we were using, and then some other formulations, we checked it with European standard pharmacological labs, and then found that they are free of toxins. And the medicines also, we gave it to them for a broad-based analysis. We cannot find out the ingredients. We can find out possibly the ingredients. There are multiple ingredients, more herbal. We try to eliminate the
presence of toxins in the form of metals. That we make sure. And regarding the question of testing the efficacy, we are more bothered about the safety, and then only the efficacy comes. And then we run a complete biochemical investigation on these children every 6 months, running the renal parameters, hematological and hepatological parameters. And to add one more point regarding what Dr. Pawanji was mentioning about the small scale units quality control and the large scale manufacturers quality control. See, like you should be aware of the condition called gastroesophageal reflux disease, which is very common now. And in ENT, that is 70% of people come with GARD, and then they come with laryngospasm. In this, I learned from one of my Siddha physicians, Muttu Parpam is very, very efficacious in relieving the interarytenoid mucosal congestion, which is the cause for laryngospasm. See, like when the GERD is very, very high, and especially in people who take alcohol and despite warning, they go for a laryngospasm and the hacking cough, in which the Muttu Parpam, you mix it with butter and then give it to them. It acts very, very well, and it gives relief almost within 2 to 3 days. And there are different people manufacturing Muttu Parpam in Tamil Nadu. And I go for IMCOPS alone. And if I buy that Muttu Parpam from some other even reputed large-scale manufacturers, the efficacy is not there. That, if I have to mention, comparing with the Western medical or the allopathic manufacturers also, we find the biological availability of antibiotic itself is different with different manufacturers. And again, the question of bronchodilators also differ in their activity from different manufacturers. So what Pawanji mentioned is a reality here. However much there are regulatory parameters, there is definitely a paucity in the quality control. Even with paracetamol, we find differences in efficacy. Yes. Karthi, we are very fortunate. You were listening just before yourself was Professor C.B. Jha, who was for several years Dean of Faculty of Ayurveda at Banaras Hindu University. Professor Jha is one of the nation's most respected Rasa Shastra professors, author of many textbooks, etc. So thank you for mentioning Muttu Parpam as effective remedy for laryngospasm. This is so wonderful. I have put a link here to point to Professor Jha, what are the ingredients of Muttu Parpam, which is maybe has some similarity to some formulation in Ayurvedic pharmacopoeia. Sir, very few Siddha medicines I know. When I was at Jamnagar, there was one separate ward for Siddha practice, Siddha medicine. And Professor Ramanan was there, Dr. Ramanan was there. He was looking there. So few medicines like Agastha Kudambu, this some Chanduram, like and Chandamarutam, and this one for skin purpose, the lap was, I'm forgetting the name. So these drugs are preparing by the pharmacy of Gujarat Ayurveda University and supplying to the that ward, and we are using there and looking the effect of that drug. And that was so nice observation
that when the drug will be genuine, Yes. you will see its action, Action. hand by hand. So, Yes. So we come back to the same issue about how to stratify the manufacturing and efficacy determination. I think this is a very difficult issue here because there is no problem, sir. Actually, क्या है कि रसशास्त्र के कुछ मापदंड हैं, भेषज कल्पना के सारे मापदंड हैं. अगर कोई अवलेह बनाता है तो अवलेह कैसा होना चाहिए, वो सारा दे रखा है कि how to examine the अवलेह. When you are going to prepare, is it become ready or need some more processing? So there is a guideline mentioned in the particular preparation. In Bhasma, there are so many observations are mentioned. Certainly they are naked eye observation, but on that basis, without any hazard, without any toxicity or without any adverse effect, physicians are using since centuries these bhasmas. Now some new techniques for the examination of bhasmas on the basis of this modern tools and the apparatuses like XRD, SAM, TAM, EDAX. So these are and including particle analyzation. So we are certainly knowing this, that what type of compound, what type of crystals are there. But the examination parameters given in our ancient literature, we can't say that they are not adequate. They are adequate. We can additionally, new techniques and tools are applying to, जैसे कि हम भाई एक्सरे से हमारा काम चलता था, तो आज हमने अल्ट्रासाउंड भी डेवलप कर लिया. फिर उसके बाद जो नए नए सारे आ गए, क्या वो MRI और क्या क्या, तो उसको भी हम डिजीज को बेटर वे में समझने के लिए, भस्म को भी अच्छा समझने के लिए, we can use these new tools and sophisticated instruments to know about the bhasma. What type of compound is there? What the particle size is there? These are. But what I am saying, that our ancient parameters were sufficient, adequate to use it on the clinical level. Thank you, sir. I just want to hear Shayad Rajeev ji say, because Rajeev ji is deeply involved in the Quality Commission in Uttarakhand. या Anil Shukla ji से भी थोड़ा सुने, and just to see, क्योंकि इसकी कैसे इसकी जैसा इसकी थोड़ा, if we have to make regulations, then it becomes complicated. And if we don't have regulations, then the network must be small. We must know who is the manufacturer. We must be क्या हम उसको कहेंगे कि हमें ईमानदार होना पड़ेगा अपने, बिल्कुल. अगर हमने इन चीजों को इग्नोर किया, ईमानदारी गई, तो फिर बात खत्म है. उसके बाद तो क्या चीज हम बना रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरह से पेशेंट के साथ, डिजीज के साथ बिल्कुल अन्याय. डॉक्टर साहब, आई वांट टू सी राजीव जी, नमस्कार. अगर आपसे थोड़ा सुने या अग्निहोत्री जी से थोड़ा सुने एक दो चीज इसके ऊपर. अनिल जी से, अनिल जी नमस्कार. आज स्टीना जी है हमारे साथ स्वीडन से. स्टीना जी नमस्कार. But Stina ji might have missed all our Hindi discussion here. Yes, I missed quite a lot of it, but I am here. Namaskar. Thank you, Stina. We are discussing, Stina, what we are discussing today is about understanding and measuring the efficacy of formulations. And we are very fortunate to have here still with us Dr. Karthikeyan, who is a modern medicine doctor, specialist in ENT, throat surgery.
and medicine, and he studied in Madras Medical College, Stanley Medical College in Madras, and he is a very keen follower of Siddha medicine. So he's a modern medicine person, but he follows Siddha medicine, and he has a lot of experience, and he has been following local Siddha Vaidyas. He has a formulation, a very simple fumigation procedure that is very, very effective, and he knows it is very effective. He can see the effects. We are also fortunate to have here with our senior most professor here, Professor C.B. Jha, former dean at the Banaras Hindu University Faculty of Ayurveda and professor of Rasasastra. And there is a diversity of opinions here. How to establish good standards of the formulations, how to quality control the formulations, how to then make sure that the physician, the Vaidya, understands these formulations and can modify the formulation when needed. These are big challenges, because, and finally, how do you measure the efficacy of that formulation? At a time when every individual is unique, the physician must be so skilled to make those interpretations. So this is what we are discussing. I know you are interested in local herbs of Sweden. I'm so happy you have joined us today. And I also know that you are a board member of the European Ayurveda Association. So I want to see, I know you had some difficulty to listen to the Hindi perhaps, which Karthikeyan-ji might also have had. So bear with me while we continue our discussion, whether we can request Dr. Rajeev Kurele joining us from Uttarakhand, whether Rajeev-ji would like to add something, or if Anil-ji wants to add something, they're welcome. And if both of them are still waiting for more comments, then I request Agnihotri-ji just to comment on what he has heard till now, and whether there is something he can add to our discussion. Agnihotri, pranam ji. प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच. हमारा गुरुदेव प्रोफेसर झा साहब को पहले प्रणाम. आज सुबह से ही हम सारे अपने गेस्ट स्पीकर्स और उसके बाद के डिस्कशंस को सुन रहे थे, लेकिन चूंकि हमारा यह विषय नहीं है, यद्यपि बनी बनाई औषधियों को निर्धारित करना मरीज के लिए, इस काम में तो 30 साल बिताए हैं, तो अच्छा लग रहा था. जो भी आयुर्वेद पढ़ने वाला है वो सब के मतलब का है ये, उसको हम देखा करके. बिल्कुल हर कोई चिकित्सक है, हर कोई चिकित्सक है, हर कोई मेडिसिन यूज कर रहा है. गुरुजी, सुनने में आनंद आ रहा था ना, इसलिए मैंने कहा कि पहले सुन के बनाएंगे. ठीक है. हम मैडम अपने मिस एस्टीना एंडरसन के भी इंटरेस्ट पे थोड़ा सा भाषा का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे. What I would like to say that way back 50 or 55 years back, I am quite sure there were, I am remembering those great souls on today's occasion. One was Dr. Vaidya Agarchand Vaidya, AMS from BHU. The other one is Vaidya Ganesh Prasad Dikshit ji, AMS from BHU. One other one is Pandit Bal Mukund Agnihotri, who has to be our father's means Fofere uncle. So वो भी बुआ जी अग्निहोत्री खानदान रही होगी. And the fourth one is Pandit Asharam Chaturvedi. These are 4 Vaidyas, great souls. They were simply remembered and known Vaidyas because they were preparing the medicines which they were using to their patient by their own. Otherwise, no, nothing. अगर कोई चीज वो बना नहीं पाते थे तो वो मरीज को प्रिस्क्राइब नहीं करते थे. नियम था कि वैद्य मीन्स वो जो स्वयं औषध निर्माण कर रहा है अपने खर्चे के लिए. एक श्याम नारायण वैद्य और हुआ करते थे हमारे फर्रुखाबाद में, जो पाकड़ का पेड़ था, वो पिलखन उसके नीचे बैठते थे. उनका परिचय यही था कि पकड़िया वाले वैद्य. एक पंडित हरितराम दुबे जी हुआ करते थे, दिवन कीर्ति रस काकासू, ऐसे उन्होंने कोड नाम डाले हुए थे. ये मैं अपने 6-7 वर्ष की 8 की वर्ष उम्र से देखता हूँ, पिताजी ले जाते थे, करते थे.
भाई साहब लखनऊ में हिबिट पॉलिटेक्निक महानगर में पढ़ रहे थे, उनको टाइफाइड हो गया, नहीं ठीक हो रहा था, तो उन्होंने मंत्र भी दिया, उन्होंने ही केवल उबले हुए पानी को पिलाया और बिल्कुल निराहार चिकित्सा जो होती थी जारी। तो मैं ये सोच पा रहा हूँ आज हम पहुंचे कहाँ से। हम शीतोपलादी, मैंने अपने पंडित आशाराम चतुर्वेदी के यहाँ जो ये क्या कहते हैं छिपकलियां और ये सब चीजें तेल में उबलते हुए देखी हैं बहुत से त्वक रोगों के विकार के लिए जो उनका तेल संधान करते थे, खुद देखी है। और मैं स्पेशली जाता था जब से स्कूल में दाखिल हो गया था सन 73 से, मुझे सारा आज ये याद आ रहा है हम थे कहाँ, पहुंचे कहाँ। सिंपली बिकॉज हमारा संसाधन सीमित हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो गई और हम हैंडीकैप हो गए बड़ी बनाई प्रिपरेशन के लिए। उस जमाने में डावर वैद्यनाथ बहुत हुआ था, गुरुकुल कांगड़ी, एक दो उधर हमदर्द इधर आ गया, अपने यूनानी की चीजें आ गई। तो व्हाट आई वाज लिसनिंग टुडे दैट टुडे डॉक्टर पवन कुमार शर्मा proved that he has retired because he has got a very sound voice. At the same time, today he was the sound of or the voice of his voice was of different pitch. आज उन्होंने जो खुल के बोला है, यद्यपि ये प्राइवेट सेक्टर में बोल कह रहे थे या गुरुजी इधर कहे कि जब तक धूल भी नहीं बिक जाएगी तब तक आयुर्वेद के औषधियां विक्रेता जो करते रहेंगे। और खास तौर से खारी बावली दिल्ली 6, खावरी वाली दिल्ली 6 में आराम से बोरे के बोरे आते हैं, ईश्वर जाने उसके अंदर अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, गिलोय है, क्या है। और मैं कितनी बार स्कूल कॉलेज में फार्मेसी में काय चिकित्सा का व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि स्वस्तिवत बाद वन डिवीजन ऑफ काय चिकित्सा, वी वर गिवन द असाइनमेंट बाय आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड डॉक्टर पूजा भारद्वाज that you go to the pharmacy, Rishku pharmacy, which is also having a very good image in our Uttarakhand. Go and see the samples supplied by the supplying manufacturers or suppliers, so that you will select the best. And we were putting the code, one from Kajiksa, one from Devguna, and one from Rashas department. We did a lot. तो जो सैंपल में सामान आता था वो मान लिया अच्छा है, या त्रिफला जो ड्राई, वो सॉरी आमलकी की जो ड्राई उन्होंने फलमज्जा दिया है, तो वो उसमें कहीं फंगस लग गया, व्हाइट पैचेज आ गया, सब हो गया, हमने रिजेक्ट कर दिया। तो पहले तो सैंपल रिजेक्ट, उसके बाद आती थी कोटेशन, जब खुलते हैं तो वहां भी हो जाता था। अब सैंपल सिलेक्ट कर दिया, कोटेशन भी सिलेक्ट कर दिया, माल सप्लाई आई जब बोरों में, तो हमारे डॉक्टर देवेंद्र सेमवाल जी हुआ करते, मैं बाई नेम इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग गंभीरता से जुड़े हुए थे। उन्होंने गेट में उसको बोरा खुलवाया, देखा, नापसंद कर दिया, वापस कर दिया। हर्बल ऑटोमेशन, इंडियन हर्ब से पता नहीं क्या क्या 4-5-6 कंपनियां। अब होता क्या है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रेट ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार, नो कॉम्प्रोमाइज, जो निर्माण वैदिक रूम्स होते थे। तो जो आपने कहा ना गवर्नमेंट सेक्टर में चल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में अंधाधुंध मुनाफे के चक्कर में कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी यही प्रॉब्लम है जो आपने कही। अब देखिए जो पवन जी बता रहे थे L1 L2 क्या होता है, ऐसी एक चीज और थी, कुछ चीजें होती है, इनको कहते हैं कि अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट। अब देखिए हमारी मजबूरी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट इन उत्तराखंड, अगर मान लिया गवर्नमेंट का अप्रूव्ड रेट 40 रुपए पर केजी की शुगर का है और मार्केट इसमें 36 रुपए वाली मिल रही है, या दूसरे सप्लाई ने 36 दी है, तो हम 40 की भी रिलेक्टेडली ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है, उसमें हमें कोटेशन को देखना ही नहीं पड़ता। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट भी ओके, जो अप्रूव्ड एल उसने डाल दिया तो कर दिया। तो कहने का अभिप्राय ये तक आज जितनी चर्चा हो रही है, हम हैंडीकैप सिर्फ इसलिए बन गए कि मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनियां थी उन्होंने फॉर्मुलेशन पास करा लिए, और उनको चाहे वो हिमालय ड्रग्स हो, महेश्वरी हो, हमारा ऊंजा हो गई, दूसरे तीसरे हो गए, जब वो इस पर आ गए, इवन मॉडर्न मेडिसिन की कंपनियां जैसे कि गुफिक है, एलम्बिक है, इन सब ने उठा के देखा कि आयुर्वेद में तो बहुत स्कोप है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बना दिया। एलम्बिक की ग्लाइकोडिन तेरबसाका, अब वेसिका तो अपना है, उसको उन्होंने डाल दिया, आयुर्वेदिक डिवीजन पैदा कर लिया। डावर नहीं, पूरा डावर ने आयुर्वेदिक होते हुए पूरा मॉडर्न डिवीजन पैदा कर लिया। तो जो पवन जी कह रहे थे, प्रोफेसर गुरु जी कह रहे थे हमारे, कि सारा खेल तो मैन्युफैक्चरिंग चला गया, चिकित्सक बेचारा क्या है, चिकित्सक कितना भी योग्य है, दोषों का अंशांश कल्पना करके उसने निदान भी कर लिया रोग का, लेकिन उसको अगर गुणवत्ता युक्त औषधि नहीं मिलती है तो उसकी चिकित्सा से प्राप्त होने वाला लाभ रोगी को और यश चिकित्सक को दोनों नहीं मिलते हैं।
और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाई बनी मौजूद है और चिकित्सक श्रेष्ठ नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं अच्छी है, तो वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो मेरे तो सिंपल बहुत ही इन द मिनिमम वर्ड्स आई वांट टू से दैट इफ वी वांट टू गेट द सेम ग्लोरियस एरा ऑफ आयुर्वेद, वी आर सपोज्ड टू हैव some quality control right from the supply of the ingredient to the factory। जैसे कि हमारे रामदेव जी क्या होता है, मैंने खुद जाके देखा है, अगर फंगल वाली आचार्य जी बालकृष्ण ने कितनी बार मुझे ले जाके देखा है शुरू में जब यूनिट थी कि देखिए इससे हम एंटी फंगल इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सप्लाइड बोरे के बोरे आ रहे हैं, जेटा मानसी दे आर ब्रिंगिंग फ्रॉम नेपाल, तो क्वालिटी कंट्रोल वहां से हो रहा है। तो बाद में कुछ भी जो भी उतार चढ़ाव आया, नो आई एम नॉट गोइंग टू दैट पॉइंट, but if the quality control is maintained at the level of the supplied in active engaged herbs, then we can think of it that the production, the formulation will be of great value and definitely it will work. We have to be little bit have to compromise for the cost. Definitely, if a thing is low quality is 60 rupees, the high quality will go 80 rupees. That we have to bear. That we have to bear with the same. And this is what the Jandu and Dudh Corporation is doing. I today itself got this Jandu. See, this is Chandra Pravati. I today itself got the Goksha Goglu from Dudh Corporation. Today itself, because I was feeling that something. I today got the Jandu Giloy. Today itself. And they said that if you are taking Jandu, it is of this cost. And if you are taking Dudh Corporation, it will go 120 rupees extra for the same quantity, the same name. So how funny it is. It means they might be, it sounds the message that they might be containing the quality, and the drug prepared is under the quality control process. So this is what the extract is, that if we go or pay the extra money, we should understand that these companies are paying or taking full attention for making the quality medicine. Thank you, sir. Thank you. Thank you, अग्निहोत्री जी। इसमें अग्निहोत्री जी आपकी जो point से क्या निकल रहा है जी, we must have incremental improvement in our quality assessment. And it can be applied from small scale industry, like the Vaidyas, those who are manufacturing for their own, and up to the higher level industries. Our so many Dr. Professor Dr. Chandkant Katyar, he is also MD, PhD of extras from BHU गुरुजी लोगों के अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं। कुरेले काम कर रहे हैं। कुरेले ने 3 संस्थाएं देखी हैं, पतंजलि भी देखी है, CDF भी देखा है, रानीखेत वाला, और अभी भी हमारे अच्छे लाइसेंसिंग उसमें लाइसेंस देने में जहां ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप समझिए वो बंदे अब यही है कि हमारी नौकरी लग गई है, हमें काम करना है, लाइसेंसिंग वाले कुछ और उनको टिटबिट्स मिल जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए, बट sufferers are the patients, or sufferer is that person who is paying the money for that preparation. This is what the submission is. Agnihotra ji, I have put here one example. This is coming from Kerala, and it is called Care Keralam, and their idea is incremental improvement. And if we look at the membership of Care Keralam, you will see this long list of small manufacturers. Ye dekho ji. These are all manufacturers, and it is a very coordinated activity because they are all saying we want high quality ingredients. Ye dekho ji, these are all the members of this small. Sir, this is the literature. Sir, this is the literature. This is the document. What is inside the bottle? That is important. That is also important, of course. That is also important. This is also very, very important that we keep this in mind. The reason why I put this one, this Care Keralam, I put this here is because I think this is a good model for Uttarakhand also. There must be, because you are a big force in manufacturing with Baba Ramdev's facility in Uttarakhand. You are a very big force today in national quality. If you want, you can be a driving force for quality standards with Patanjali. So it is just to say that there is a model already operating in Kerala, because they feel if you centralize a little bit, at least the quality is assured for the raw material. We are lucky to have Stina Ji today, because Stina Ji herself is making some preparations from Swedish herbs. And recently she was talking about the use of one of these formulations for treating some herpes
herpes simplex treatments. And I don't know if Stinaji wants to, Stinaji, whether Sir, you want to. sir, I think your Care Kerala preparations is now reaching to Uttarakhand, Haridwar. Achha I'm ji. just remembering that any of the preparation of pamphlet, just when you show it, I recapitulated that Care Kerala preparations are there, and some of our practitioners, those who are having indoor facilities, they are bringing getting the Care Kerala preparation along with some tissue preparations also for the Panchkarma, etc. So this is birth. Agnihotri, this is the reason why I put this there is what is coming clear from today's discussion is the quality assessment must be at many, many levels, or from the gathering and procurement of raw materials all the way through the chain to the qualified, jaise Guruji ne jo bataya, to teach the physician the finest details. Ki if you take Triphala, you must be confident to be able to change the ratio. You must have connections somewhere. So this is everybody is involved in this activity. And I'm so happy Stinaji is joining from Sweden. Stinaji, namaskar. Please tell us a little bit about your Swedish herbs and that one preparation that you have done, which you made yourself and has been effective in your, wherever you have used in your small way. Yeah, it's just a small way. Well, it all started that I realized that there are no really efficient treatments for herpes in Sweden. So, and in Norway it is. So it's a tincture made of myrrha in Swedish. What is the name of this plant, Stinaji? Yeah, I can write it in the chat box, I guess. And let me see here. It is a tincture made from this plant, Yeah. and you have made it yourself. Yeah, yeah. And what I did was that I found these old recipes from that the apotheke used to have. So I used the old recipe, and I did the tincture, and I tried it. Since I do have problems sometimes, a little bit stressed or because of the sun, I tried it on myself, and then I had a few volunteers that I really tried it on, and they said that they have nothing better than this formulation. So that's really good. But we're not. I mean, this is like, we're not allowed to do medicine and sell it as medicine because there are some regulations coming from the government. So we have to take that in advantage. So we cannot, we have to be very careful. So now this is Stinaji, the plant you are using, a relative of this plant is used in Ayurvedic medicine also. Gugulu. This is a different species of commiphora. And all the senior people here, particularly Professor Jha. This is Indian Gugul is Commiphora mukul, but it's in Mir is a synonym or variety of the Gugul. So maybe found in a different part of the other part of the world. Other parts of the world. Yeah. In India, it is Commiphora mukul. Commiphora mukul. Yeah. अनिल जी, आपसे थोड़ा सुने जी आज की चर्चा के बारे में कि I invite to finish Mrs. Stina, then I will talk to you, sir. अच्छा जी, after Stina ji, thank you. Yeah. After, so Stina ji, the question now is, you have what Professor Jha is saying, the Vaidya once upon a time used to make their own preparation. Agnihotri ji has given us names of famous Vaidyas who would only use formulations that they made themselves. They wouldn't use anything else. So that is, and that is what your example that you have given us today, that when you make a formulation and you use it and you see the effect, it reinforces your confidence. And what Pavanji's comment is, despite all these difficulties, Ayurveda is still producing effects. So what wonderful additional benefits can be had if we maintain all these standards.
So it is lovely to hear from you today, and your comments are very precious here because you are adding another dimension, in the upcoming discussions in Jamnagar for the WHO Global Center for Traditional Medicine. All the discussions that we are having today is important because for the 6 regions of the World Health Organization, they have now identified different systems of medicine that are going to come. And the question of efficacy will remain, whether it is homeopathy, whether it is naturopathy, the 2 identified from WHO Europe, or whether it's Ayurveda, Yoga, and Thai medicine that is identified for Southeast Asia region, or for Africa region, who are also having a lot of plants that are used in their systems. This issue that Pawanji has challenged us today with about efficacy and that we are discussing is central to this whole issue of how we measure efficacy of whatever formulation that we have. Anilji, thank you for rejoining us. Namaskar ji. Sorry, sir. There was another meeting was scheduled. So I'm extremely sorry. And I'm very happy to have you. Yeah, we are happy to have you back. Thank you, sir. Thank you. I'm happy to see Srinath ji has done wonderful thing like our Vaidyas doing in the past, that they do formulate for their personal use or for their patient one-to-one. I think the preparation of Mir, I think what he prepared, I am not properly that he made from any juice or any local application for herpes, because we are aware that herpes is a vatic disorder and Mir is very good vat samak, you mean action. So it's very helpful in herpes type of condition. So congratulations to Srinath for thinking and giving the direction to Sweden medicinal plant users that they can also make themselves or for their patient or for their practitioners. So, sir, after listening all those things, my humble submission is for efficacy of any product, not for Ayurveda, for any pathy, even allopathy also, or homeopathy, siddha, any pathy, all ayurvedic, even yoga, what they're using, what they're practicing, it should be all standardized. For standardization, efficacy comes later on. First of all, our product, what we are using, or we are going to use, our manufacturer producing, the from very beginning from the raw material. This raw material source must be proper. The raw material sourcing, how they're collecting, the collection practice also should be teach and to the collectors also, because maximum collectors are not a very academic or very learned or very sound academic persons. So we have to season wise and region wise collection of the raw material is very important. What we are trying weld. What about the for plants which we are cultivating? For cultivation, our government of India, you have heard about that in the recent past, they have announced humongous amount, some billions rupees for the cultivation of medicinal plant, looking at the demand of the Ayurveda worldwide. In the Corona time, you are aware that this Tinospora and Vidania, there were shortage in India. So that the Indian government is very now focusing for like yoga, practicing the Indian medicinal plant sector also. So the quality planting material is very much required for cultivation. So nowadays maximum collection from source is wild from forest only. But nowadays looking at the this unavailability, looking at the demand, cultivation is as government India is also promote the cultivation of the medicinal plant. For that, this quality planting material, good cultivation practices, there are different formats. One should, the concerned or the stakeholders must be trained for the good collection practices, good cultivation practices. After that, harvesting, good conservation practices. The different protocols have been designed by experts of the concerned subjects. So one, so if even we and all the concerned stakeholders from the industry, from academia, from research,
they must all follow all those guidelines of the clinical practice comes later on. What we are going to use is standardized and efficacious. So after collecting proper material, we should following good manufacturing practices, GMP. Getting GMP certificate is very easy in India, but as per norms, I think very few companies in India following the GMP norms. I'm very harsh to say like this, because I'm from field only, and I have visited more than 100 companies in India. But sorry to say that getting the certificate and following the norms are both different things. डॉक्टर So साहब इसके ऊपर आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट हियर जी अनिल जी ये जो आपने जो बताया इट्स इजी टू गेट द सर्टिफिकेट बट डिफिकल्ट टू फॉलो हाउ कैन वी डू सम इंसेंटिवाइजेशन और समथिंग जिससे देयर इज इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट 1% इंप्रूवमेंट थोड़ा सा करके थोड़ा regular training is required of the manufacturers. Regular training, like CROs, they are not doing only the clinical trials. They can conduct the regular periodic area wise. Some like manufacturers of Uttarakhand or manufacturers of Himachal Pradesh, they should go and train with all our academic friends like Dr. Agnotri ji, Dr. Professor C.V. Jha ji. They can go together and train we can form one forum, and they should train the manufacturers for following the GMP. All things can't be expected from government only. Government has limited resources and limited hands to make the people follow. Honesty is also, Professor Jha is telling that honesty is must. So, but for business, people are doing business. They can't follow everything because they have to make the MRP also, the selling price also. So following everything will cost too much and probably will not buying the product then. अनिल जी हमारे साथ है जी आज निगम साहब राकेश निगम साहब राकेश जी से थोड़ा सुन के आएंगे जी आपके पास Yes, sir. Please, sir. Okay. राकेश जी नमस्कार जी अनम्यूट प्लीज आपका आवाज नहीं आ रहा है राकेश जी यू हैव टू अनम्यूट नहीं जी आवाज नहीं आ रहा आपका नहीं जी आ गया आ गई राइट नमस्कार जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग नमस्कार सर सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन मैं लेट जरूर ज्वाइन हुआ लेकिन मुझे आइडिया है व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एवरीवन इज आफ्टर मनी ओनली इन वन वर्ड ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरर is only are behind money, how to get maximum money, how to extract money from others' pocket. This is the only one formula is going on in manufacture factor. And that's why in Bhishak Devyanu Chatushpad, Bhishak Devyanu Vasthata Rogi Pad Chatushtiyam के सार्थक गुणों के अनुसार यदि हमें औषधि 4 गुणों वाली नहीं मिलती है तो ऐसी औषधि के बिना चिकित्सक कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं सिर्फ लौंग की तेल की बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसी प्रदेश का नाम लिए बिना ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए उस प्रदेश में था। मुझे स्वयं दांत का दर्द हुआ। क्लोव ऑयल लौंग का तेल ढूंढने पर भी मुझे शुद्ध तेल नहीं मिला। डाबर का तेल शुद्ध लौंग का तेल मैं यूज करता था। मैंने डाबर का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसमें मुझे विश्वास है कि उसको 1 ड्रॉप डालने पर भी दांत के दर्द में आराम मिला। मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ डाबर का, लेकिन मैं जहां पर अच्छाई है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेडिसिन यदि हमें उच्च गुणवत्ता वक्त मिलेगी तभी हम अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाइड कर पाएंगे और जो प्रिस्क्रिप्शन हम देंगे उसके रिजल्ट उनको मिलेंगे। अन्यथा आज तो ये स्थिति है कि एमआरपी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे 4 गुना से ज्यादा एमआरपी दी जाती है। उसके बाद उसमें डॉक्टर्स को कमीशन दिया जाता है 30 to 40% या 50% तक अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं सर्टेन मेडिसिन को। तो इससे ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर से लेकर के आयुर्वेद के चिकित्सक से लेकर के मैन्युफैक्चरर सिर्फ मार्केटिंग एंड अर्निंग पे ध्यान देंगे तो निश्चित है कि आयुर्वेद का पतन स्वाभाविक होना है। और रही बात आयुष की, तो आयुष में मैं पहले भी योग को बता चुका हूं कि योग इज नॉट फॉर मेंट फॉर मेडिसिन।
योग इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, गेटिंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मानसिक, पहले मानसिक देन शारीरिक। तो मानसिक जब आप स्वस्थ होंगे तो शरीर स्वस्थ होना ही है। कोई भी एक्शन पहले मन में आएगा तब वो शरीर में आता है। तो तात्पर्य हमारा बहुत साफ है कि योग को एज ए मेडिसिन यूज करने की जो परंपरा हमारे देश में पनप रही है, यह उचित नहीं है। योग की सर्टेन यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक यदि हम शारीरिक संवर्धन के लिए ध्यान देते हैं तो हम धारणा, ध्यान, समाधि को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम वहीं पर रख गए तो हमारा जो मूल लक्ष्य है योग का, धारणा, ध्यान और समाधि, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि योग को योग रहने दें, योग को योगा ना बनाएं। जो योगा बन रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित रह गया है, जबकि योग शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए है और आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए है, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति के लिए है। तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और औषधि निर्माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दें, अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता युक्त औषधियां बनाएं, भले एकल औषधि बनाएं। अभी हमारे अग्निहोत्री साहब ने बहुत साफ बात बताई कि फंगल युक्त औषधियां आ रही हैं और सीधे बिना उनकी जांच किए उनको सीधे उनसे मेडिसिन बना करके उनको मार्केटिंग कर दी जाती है। ऐसी औषधियों से हमारे पेशेंट्स को फायदा होने जाए, नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि पैसा तो आप अगर पैसा कमा भी लिया, अगर वही औषधि आपके परिवार के किसी आवश्यकता, परिवार के सदस्य को उसी बीमारी के लिए अगर वही औषधि दी गई और लाभ नहीं हुआ, तब आपको समझ में आता है कि हमने क्या गलती करी। तो उससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसी चीज ही ना करें, ऐसा काम ही ना करें जो किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक हो, कल वह आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये निर्माण जो औषधि करें वो यह सोच के करें कि मैं अपने स्वयं के लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल जी, ताकि उसमें गुणवत्ता रहेगी और उसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। हाँ, पैसा जरूर कम मिलेगा। निगम जी, स्क्रीन में अब जो दिखाई दे रहा चीज जी, ये है जामनगर में जो आ रहा WHO सेंटर के बारे में। जी जी, इसमें कैसे ले आए जी इस टाइप का सोच, जो आज चर्चा जो चल रहा है वो कैसे ले आए इसके अंदर, जो जामनगर में जो आ रहा है इसमें? मैं वो आपने जामनगर की बात बोली है क्योंकि ये इंसिडेंट गुजरात से ही जुड़ा हुआ था मेरा। मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही आए हैं और गुजरात में किसी वक्त बहुत अच्छी औषधियां मिलती थी। बिल्कुल जी। लेकिन दुख है कि वर्तमान में उतनी गुणवत्ता युक्त औषधियां नहीं मिल पा रही हैं। और जामनगर में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल एस्पेक्ट को लेकर के आयुर्वेद की दृष्टि से संस्थान बनाने की औषधि निर्माताओं के लिए, तो उसमें भी यही बात आती है कि कलेक्शन ऑफ मेडिसिन से लेकर के उसका क्वालिटी कंट्रोल उसी जगह से शुरू होगा, तब हम जाकर के गुणवत्ता युक्त औषधि दे पाएंगे। तो कलेक्शन, देन उनका वापस कलेक्शन के टाइम पे भी उन ऋतु अनुसार किस औषधि का संग्रह कब करना है, यह शास्त्र में दिया हुआ है। तो द्रव्य गुणों के हिसाब से शास्त्रानुसार औषधियों का संग्रह हो, उनका प्रिजर्वेशन हो, और जैसा कि स्पष्ट है कि जितनी भरवल औषधियां हैं उनको हीन वीर्य होने से पूर्व ही उनका उपयोग कर लिया जाए। तो 6 माह से साल भर के अंदर, क्योंकि हर हर्बल औषधि 90% औषधियां सिर्फ साल भर के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए। अगर ये हम मेंटेन कर पाएंगे तभी हम अच्छी औषधियां दे पाएंगे, ये स्पष्ट है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी से सुन के। सर आपने बहुत बढ़िया बात कही। सर एक मिनट, हमारे निगम साहब नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन आज तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्थिति अलग हो गई। आपने कहा औषधियां ऋतु के अनुसार और आयुर्वेदिक संग्रहण के शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार लेना चाहिए।
आज मैन्युफैक्चर, आज निर्माता लेते हैं सप्लायर से, सप्लायर बेचारा आयुर्वेदिक नहीं होता ना, देवगुण पड़ा हुआ होता है। उसने तो क्रॉप, उसने गांव में जाके किसान ने शतावर पैदा की है या अश्वगंधा पैदा किया है या इसको दसमूल के द्रव्य लेने, वो लेके बोरों में भर दिया, उसने ला दिया खारी बावली में या अपने कच्चे माल के मार्केट में, और वहां से मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर लेके उठाते हैं, बैगन्स के बैगन ले लेते हैं। तो वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब वैद्य स्वयं, वो जब वैद्य स्वयं शास्त्र के अनुसार प्रार्थना करके कि हे औषधियां कल हम आपको लेने आएंगे अमुक नक्षत्र विशेष में, और आह्वान करके कि आप सभी बनी रहें और हम ये जनहित में लोकहित में ले जाते हैं, तो ऐसे वो तो व्यवस्था खत्म होगी। औषधि संग्रह हो रहा है, जिसमें जैसे कि खनन में बालू और रेत सीमेंट संग्रह होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है उसको मिल जाती है। तो वो तो कॉन्सेप्ट केवल आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदज्ञ या आयुर्वेद का देवगुण का विद्यार्थी अपने मेंटर के साथ में ये काम करे तो स्मॉल स्केल पर तो ये काम हो सकता है। वो भी कंट्री साइड में जाके पहले कॉन्ट्रैक्ट रखिए कि मैं आपके यहाँ फला महीने में जब आपका क्रॉप होगी तब मैं उचित शास्त्र के अनुसार लेने आऊंगा। तो आपका हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत तो बढ़िया है, लेकिन एंड प्रोडक्ट के रूप में हम फेल हो जाते हैं। इस बात तो थोड़ा कोई रास्ता निकले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही बात बोली है और आपके से मैं सहमत हूँ। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यदि हम लार्ज स्केल तो सिद्धांत तो वही रहेगा सभी जगह पर, और हमें उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम गुणवत्तायुक्त औषधि समाज को दे पाएंगे। निगम जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर विद अस, कि यू हैव शेयर्ड योर थॉट्स। वी हैव आपकी हमारी रिकॉर्डिंग चलता रहता है जी। वी हैव कनेक्टेड ऑल द रिकॉर्डिंग्स इन आवर आर्काइव, वहां से वी कैन रिविजिट एंड लिसन टू योर कमेंट्स जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंदौर से सभी को प्रणाम सर। हाँ अनिल जी, राजीव जी नमस्कार। प्रणाम, बहुत बढ़िया सेशन रहा। राजीव जी, इसकी ये छोटी सी चीज जो अग्निहोत्री जी ने जो बताया, जो जहा साहब ने बताया कि छोटी छोटी निर्माण की वो होनी चाहिए जी, उसकी तरफ कैसे करें थोड़ा सोच। राजीव जी आपका आवाज कट गया जी, म्यूट चल रहा। राजीव जी, we have lost Rajeev ji. If Rajeev ji is not able to connect, Anil ji pranam ji. Yes sir, yes sir. डॉक्टर साहब ये जो बात चल रहा है कि कैन वी रीथिंक दिस मैन्युफैक्चरिंग, जो निगम साहब ने जो बताया, जो अग्निहोत्री जी ने जो बताया बात, उसमें हाउ टू ब्रिंग रीथिंकिंग टुवर्ड्स क्वालिटी, towards local production, towards local manufacturing, small scale manufacturing. इसकी तरफ कुछ है जी? Is it something we can? Sir, stringent action. Citizen action. Stringent action मतलब कि नियम, कड़ाई से नियम पूर्वक उसको पालन कराना। कैसा है सर कि पहले 20,000 छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करते थे हिंदुस्तान में, 20,000 जो रजिस्टर्ड थी, अभी कुछ 7,000 हो गई हैं। बहुत सारी घर घर में लोग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वैद्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिशनर हुआ करते थे तो दे आर अलाउड टू मैन्युफैक्चर देयर मेडिसिन फॉर देयर पर्सन, देयर ओन। लेकिन और लोग ऐसे कि कोई 4 पाउडर बना लिया और दुकान पे बेच रहा है, ऐसे लोगों को बंद किया गया जब से जीएमपी का नाम आया। तो एक तो वो अच्छा काम हुआ, लेकिन अभी भी जो 7,000 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं इंडिया में, उनमें भी आप हम सबको पता है कि कितने लोग पॉपुलर हैं, कितने लोगों के प्रोडक्ट जनरल पब्लिक यूज करती है। मुझे लगता है 90% सप्लाई आयुष सिस्टम की हार्डली 100 कंपनीज कर देती हैं। तो बाकी सर जो 6,900 कंपनीज हैं वो सब्स्टिट्यूट अडल्ट्रेंट्स यही कर रही हैं। इसका मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स एंड SOPs व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड सेफ एंड एफिकेशियस प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट को हम सबको एक फोरम से इन्फॉर्म करना चाहिए, और इसमें पब्लिक का भी सर एक लगेगा। गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये पब्लिक ने बिजनेस स्टार्ट किया तो विरोध हो जाएगा कि हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं। लेकिन उनको हम कहेंगे आप रॉ मटेरियल सप्लाई करो, आप क्यों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। कुछ को हम सेग्रीगेट कर दें कि भाई कुछ को रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे, कुछ को प्रॉपर प्रिजर्व करेंगे, कुछ उसको
वैल्यू एडिशन करके कहीं पाउडर कर देंगे, कोई एक्सट्रैक्ट बनाएगा। सबको कैप्सूल क्यों बनाना है, सबको टैबलेट क्यों बनाना है? अगर वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जिसके पास नहीं है, उसको सब चीज करना क्यों है? बिल्कुल जी। तो कुछ लोग एनालिसिस में चले जाएं, कुछ लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में आ जाएं, तो ऐसे सर एक जो हम कहते हैं ना, एक अच्छा जो नेटवर्क ट्रायंगल बोलते हैं ना, यस, वो ट्रायंगल बना के काम हम करेंगे तो जो ये WHO GCTM आ रहा है इंडिया में, हमारी बदनामी से भी हम बच पाएंगे। इंडिया का नाम अभी स्टेक पे है सर, कि अगर ऐसे लोग करते रहेंगे, अगर ऐसे लोग करते रहेंगे तो जो पूरी दुनिया 170 कंट्री जाने वाली हैं, उनको लगेगा कि दे आर फार बेटर देन इंडिया। तो उस पे कुछ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर। मेरा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जो बोला नहीं जी, बिल्कुल। अनिल जी, इसमें एक चीज और, अगर उस तरफ देखो जी, कोरिया की तरफ या जापान की तरफ देखो, वहां भी चलता है ट्रेडिशनल मेडिसिन, उनसे कुछ सीखने के लिए कुछ है जी हमारे लिए? Why not सर? दे आर, मुझे लगता है कि दे आर फॉलोइंग प्रॉपर। मैं आपको बताऊं सर कि एक वन ऑफ सप्लायर, हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट सप्लाई करते थे जापान में, सिकाकाई। दे आर यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सिकाकाई, उसका एक्सट्रैक्ट मंगाते थे हमारी कंपनी। आई थिंक यू आर मस्ट अवेयर, जयेश चौधरी, यू नो सर, आई थिंक ही इज सप्लाइंग लॉट ऑफ एक्सट्रैक्ट प्रीमिक्स टू यूरोप एंड यूके। तो हम लोग सप्लाई करते थे। वो जापान से वो पर्सन 3 लोग आए देखने के लिए, वो सिकाकाई कहाँ लगी हुई है, कैसे लगी हुई है। उनको प्रॉपर उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक्सपर्ट को लाके, फिर वो सोर्स के पास गए जहाँ हमारा एक्सट्रैक्शन होता था। तो वो जब तक हम सोर्स को सर, जब तक हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक वो केवल चंद्रावटी बताने जैसा सर बता रहे थे मोत्री सर, कि किसी की 200 रुपए की, किसी की 100 रुपए की है, तो वैसे ही होगा सर। अभी कल एक चर्चा हो रही थी सर कि महासुदर्शन चूर्ण, निगम सर भी जानते हैं, या जो यहाँ फोरम में सब लोग जानते हैं कि वेरी पॉपुलर ड्रग, जो कोरोना काल में बहुत लोगों ने यूज किया। अब महासुदर्शन चूर्ण में क्लासिकल जो फॉर्मुलेशन सर, उसमें किराता लिखा हुआ है, स्वरसिया चिराटा। अब सर 99.99% लोगों ने चिराता या किराते यूज ही नहीं किया फॉर्मुलेशन में, केवल कालमेघ, एंड्रोगैफिस पेनिकुलेटा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हमको ये क्यों बोल रहा है कि महाश्वसन चूर्ण में चिरातिक टी डालो, अगर इफेक्टिव सेम इफेक्टिव कालमेघ है, तो व्हाई नॉट वी शुड चेंज द एपीआई AFI इवन फार्मुलरी आल्सो रिप्लेस दिस चिराता विद कालमेघ, क्योंकि स्टडी हो गई है कि उसकी भी एक्टिविटी वैसे ही है। अब किरात तो नेपाल में होता है, केवल नेपाल में होता है, बहुत रेयर, 1000 रुपीज केजी मिलता है। भूनिम या कालमेघ एंड्रोगैफिस पेनिकुलेटा 30 रुपीज केजी मिल रहा है। वो कौन डालेगा सर प्रोडक्ट में अपने किराते? तुम लेबल पे हम क्यों लिख रहे हैं मैन्युफैक्चरर कि हमने चिराता डाला है? दे शुड राइट कि उन्होंने कालमेघ ही डाला है। तो मेरा ये सबमिशन है। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट हैज बीन अ वेरी रिच डिस्कशन जी। 9 बजने में 10 मिनट आ रहा। और निगम जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम इंदौर जी। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, आपसे सुनने के लिए कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक ही बात है, क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता हो, बस यही मेरा कहना था। थैंक यू जी, धन्यवाद निगम जी। थोड़ा लास्ट फ्यू वर्ड्स हम सुने जी झा साहब से। झा साहब प्रणाम जी। नमस्कार गुरुजी। मैं फिर से वो चरक की बात को दोहराऊंगा। चरक ने सिद्धि स्थान 6 में दिया कि जो अच्छा मतलब औषध है उसमें क्या सब क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसको बड़े अच्छे श्लोकों में उन्होंने दिया है। अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम अभिकारी च व्यापत्तो नाति ग्लानिकरम च यत् गंध वर्ण रसोपेतम विज्ञान मात्रावद औषध। मतलब सही मात्रा में औषध अगर दिया गया है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो ये यहाँ पर चरक ने बताने की कोशिश किया है। करीब 12-13 ऐसे लक्षण दिए। और इतना मैं समझता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट में औषधि के गुणों के बारे में नहीं दिया गया। अगर हमने मात्रा से किसी पेशेंट को औषध दिया है तो वो क्या क्या करेगा, तो वही उसने बताया कि अल्पमात्रम महावेगम, वो वेगवान होना चाहिए औषधि, खूब इफेक्टिव होना चाहिए, तेजी से काम करने वाला, क्विक
क्विक इफेक्ट। और लघु पाकम इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हल्का हो डाइजेस्ट, बिल्कुल लाइट इन डाइजेशन। और सुखास्वादम, टेस्ट में भी वो पैलेटेबल होना चाहिए। प्रीणानम, प्रसन्नता पैदा करने वाला हो। व्याधिनाशनम, डिजीज, जिस डिजीज के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको नष्ट करने वाला होना चाहिए, व्याधिनाशनम। अभिकारी से व्यापत्त हो, किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का व्यापत्ति नहीं, उपद्रव नहीं होना चाहिए उसके लेने से। और गंधवर्ण रसोपेतम, और जिस मटेरियल को हमने उसमें डाला है, what ingredients we have used in that particular dosage form, that's flavor, gandh, varna, color and taste should be there. तो अगर ये सारी चीजें अगर मेडिसिन में हैं, then these drugs can be considered as the standard. इसको हम अगर चरक की भाषा में कहें तो मुझे लगता है कि मेरी समझ के हिसाब से it should be like that. जहाँ साहब एक और लास्ट क्वेश्चन जी, जो अनिल जी ने जो बताया कि there is a need to educate the public and also educate. मैं सीधा मानता हूँ कि there should be, क्या बोलते हैं वो, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। आप जापान चले जाएं, कोरिया चले जाएं, दूसरे किसी कंट्री में चले जाएं, वहां पे ईमानदारी है। और हम अपने यहाँ इस चीज की बड़ी कमी महसूस करते हैं। और पर्टिकुलरली जैसा कि बताया गया कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए, आयुर्वेद के नाम पर जो ही मर्जी हो वही आयुर्वेद जोड़ करके उसको भुना ले रहे हैं। और टीवी में ऐसे ऐसे ऐड, जबकि ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत these are prohibited। वो एक कोई ऐसा अच्छे मतलब रेपुटेड जो स्टार हैं, दे आर प्रोपोगेटिंग, एडवर्टाइजिंग दैट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इन ए रॉन्ग वे। तो सवाल ये है कि ईमानदारी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इट इज इफ ईमानदारी विल नॉट बी देयर, तो हमारा कोई भी मतलब जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। गुरुजी हमारे साथ है जी आज तेजेंद्र जी। तेजेंद्र जी नमस्कार जी। If you would like a few words, you please unmute. You are our junior person here. Tejinder ji is a MD student ji. Or if I can take one last comment from Karthikeyan ji before we return the floor to Pawan ji. Sir, pranam, namaskar. Tejinder ji namaskar. Thank you for joining. थोड़ा जहाँ साहब को बताइए जी, आप कहाँ से जुड़ रहे हो और क्या? सर मैं डॉक्टर तेजिंद्र देहरादून से, एमडी स्कॉलर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य। सर आज का टॉपिक काफी क्लिनिकल ओरिएंटेड है और इसकी नीड काफी है। आजकल जो मार्केट में मेडिसिन तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट उनकी पोटेंसी कितनी है वो एक काफी हद तक हम कुछ लिमिटेड कंपनीज पे ही हम बिलीव कर सकते हैं, या खुद से अगर हम कोई औषध योग बना रहे हैं तो उस पर हम बिलीव कर सकते हैं किसी पेशेंट को देने के लिए। कहीं ना कहीं ये भी एक पेशेंट और डॉक्टर का भी ट्रस्ट इश्यूज इसमें हो जाता है। अगर हम किसी कंपनी का कोई हम चिकित्सक डॉक्टर अपने से तो अच्छा सा एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, बट उसमें क्वालिटी कितनी है मेडिसिन में, उसका पोटेंसी कितनी है, वो भी डिपेंड करती है। इसमें काफी हद तक हमें एक वो करने की जरूरत है कि एक हर किसी कंपनी ने लिखा रहता है, जो अभी मैं सुन रहा था सर कि काफी हर कोई कंपनी मेंशन कर रही है कि उसमें उन्होंने ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, बट एक्चुअली में वो उसमें है या नहीं। कई कंपनीज तो उसमें अगर 40 उसमें लिखा है तो मैक्सिमम उसमें 10 ही यूज कर रहे हैं। इवन च्यवनप्राश अगर आप बात करें हम, तो उसमें अष्टवर्ग तो हर कोई लिख रहा है, बट अष्टवर्ग तो कोई भी यूज नहीं कर रहा है। ये बात जो आपने उठाया, ये जहाँ से आपकी जो ईमानदारी वाली बात में आ गया ना। हाँ जी सर। चलो जी, थैंक यू तेजिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, फॉर शेयरिंग। जोड़ते रहिए जी। Thank you, sir. Very important. We want you in the platform, because you are the future for our activity here. With those few words, thank you so much, sir. We are coming to almost 9 o'clock. I would request Pawan ji to take on. We can conclude, sir. Okay, Jahan sahab, I want to thank
Jasab, thank you very much for sharing your thoughts. Karthikeyanji, Yeah. would you like to share a few words before we return the floor to Pawanji? Yeah. I just wanted to mention that I had a friend in US who was a genomist, and he was interested in Amazonian herbs. It is way back in 2008 to 2010. I have mentioned it in private to you. And he was working on India also. He was coming to the Andhra Tirupati University. And then he used to tell me, like, we can express, or we can bring out the Ayurvedic medicines only through genomic expression profiles. And these are all compounds, and then individual specific purification, and then, characterization, and then something like what is done in a Western medicine will not be applicable. So we need to devise methods of genomic expression profiles, and then only we can prove Ayurvedic medicines. And he was quite friendly with me, but like he is no more now. So this is the wishful thinking I want to put forward to Dr. Madan Thangavelu to proceed further for the future. We have to possibly develop a central lab facility where even the small scale or the large scale manufacturer can use it up. So they need not spend millions on R&D. They can use this facility, and then this can be a monitoring committee who can guide them into a proper protocol also. That is my view. Karthikeyanji, thank you so much. You have offered this as a suggestion in your talk recently. It has been noted as a very important area. And I feel something similar can also happen for yoga. Yahan pe, I'm just projecting one last image here, the physiology of yoga. And it says an evidence-based look at how yoga affects health and well-being. This book is written by somebody who was trained as a modern medicine doctor here in the UK, but he was disillusioned by modern medicine, but then shifted towards yoga. And I feel these are the kind of interfaces between modern science, like you said about genomics and expression profiling, etc. That interface between modern science and the ancient science. And I hope that our resource, the Global Resource Center that is coming up in Jamnagar, will take note of some of these things. When we go into more sophisticated areas like what Jasab is doing, Professor C.B. Jha is doing, Rasaushadhis, which are very, very sophisticated areas of science where the quality control is even more stringent, then there is clearly a need for a new way of thinking. And we want to thank Pawanji for bringing us and giving us this opportunity to discuss this point about efficacy. It is a problem with all our systems of medicine. And today we have dissected some of the needs, and this discussion will continue. As Anil ji says, it is our responsibility, senior people like Professor Jha and Agnihotri ji, to start to see how we can provide directions for educating people, if I understood Anil ji correctly. With those few words, as we approach 9 o'clock, I draw our discussions to a close. I give the floor back to Pawanji, if Pawanji is there to take the proceedings on. Pawanji, Pranamji, Namaskar. Thank you again for bringing us all together on the 404th webinar, where you have challenged us with a very, very important topic, efficacy. And it is a topic that plagues modern manufacturers, modern pharmaceutical people. And when it comes to traditional preparations, where our descriptors are many, many more, where we use polyherbs or we use minerals the challenge is even more. But this topic is alive. It will stay with us. We will come back to discuss this again many, many times. But my wish is that if we keep the momentum up, then our message will reach this global center that is coming in Jamnagar.
somebody like you, Pawanji, and former student of Jamnagar, has additional responsibility that you should take this message to your alma mater. Namaskar ji. Thank you very much, Madan sir. Thank you very much. Thank you, Jha sir, respected Jha sir. Thank you. Now I would like to request Dr. Agnihotri sir for his final remarks. Thanks, Dr. Karthikeyan sir. Thanks, Sriraji. Thanks. Agnihotri sir. Thanks, Dr. Pawanji. Namaskar. Namaskar, Professor Ganguly and Pranam Guruji, Professor Shukla. We today completed 404th webinar on today. Just our point of crisis is this, that we are increasing the number of webinars day by day. At the same time, we are not increasing the number of our participants, listeners, and viewers. We had only 17 highest in number, and now only 9. Earlier, I appealed. Sorry. Earlier, I appealed on that day to Dr. Tejinder Singh, Dr. Dhananjay Srivastav, Dr. Hema Malini, and all our youngsters, those who are attached with any of the group, hospital, college, that they may pay some attention to their students, or they may guide the student that you see. We are having such a great discussions, and sorry to say that our new generation is not getting benefited to that extent which we expect. Anyway, today was the greatest topic of very much interest. Of course, it is of interest with the physicians, doctors, and practitioners. It is also of great value for our patients. It may be a favorable point, or may not be probably a bitter point to the manufacturers, because manufacturers' interest is different. We are our Nigam sir and our Guruji, everybody is telling like this, that we should observe honesty. We should observe honesty. Now the thing is whether the physician should observe honesty, whether the patient should observe the honesty to pay the money, whatever is the medical store was asking, or the manufacturer should be competent enough and dareful enough to observe the honesty. During the purchase of the raw material from any supplier, during the manufacturing process, having full faith to the Nirmana Ved and whole of the team, the quality team also, and as told by our Karthikeyan sir, that it will be better if a monitoring committee be there, and it should make a surprise visit to the different sectors of collection of the raw material sector, the processing sector, the manufacturing sector, then packing sector. Whether in packing sector, if the label is written that 50 gram, it contains 50 gram, and it may be 40 gram. I have seen this thing. I am not going to spell the name. Patient got that medicine from the OPD or from a dispensary, and they came to me that this bottle is having say 50 gram containing the capacity of 50 gram or more, and the wrapper is also displaying the same information. But you see, this bottle is containing at half mast. What is that? This is what the hidden concept of the commission. When the commission is taken in advance and you are giving the order to that person, naturally he will cut that some place to save his money. So it may be bitter to the manufacturers. So that monitoring committee may have a surprise visit to all the plants of one company is having, say at Dharamshala, Himachal Pradesh, or in Saibabad, or in other place. So this may be a little bit process of quality control. Before I proceed to any of our guest speakers extent, I would like to pay my attention, my respect and regards, first of all, to Professor Guruji, Professor C.V. Jha sir, Professor Nimadan Tangalu sir, Professor B.R. Sharma sir, Vaid Rajan Patankar sir, Vaid Jayesh Chakraji, Dr. Nitish Kumar Pandey ji,
Dr. Minal Akre ji, Dr. Preeti Banerjee ji, Dr. Kamini Dhiman ji, Dr. Rampal Somani ji, Dr. Jagdishwar Doma ji, Dr. Karthikeyan ji, Dr. Namrata Joshi ji, Miss Christina Anderson ji, Dr. Rakesh Prakash Nigam ji, and Dr. Tejal Singh ji. As was welcomed by Professor V.P. Sharma sir today, to all the dignitaries along with our guest speakers, it is our customary to pay attention. We are all always having the Atithi Deva concept, that too in daily practice, not only in text or in mind. We always observe this thing, and we are cultured for that. And then the subject was introduced by Professor Madan Sarji. Very naturally, he is a deep source of knowledge, or he is the ocean of knowledge. He tells all that sector that to where we should strike. As a matter of concept, which can be discussed on, which is discussed by Professor C.B. Jasa, being an expert of our this field, RSBK. So he put all these things, and he also underlined regarding the Sambhag Tirfla or Dugal Harit ki Tirfla. So this is what the choice of the Chikitsak or the self-preparatory Vaidya, who as per the need of the patient is always on permutation combination for getting the better results and for saving the time also. It is not costing much. So Professor Jha touched that very area, and today's Vaidya should also like to have it. If I say that you go with Amal ki churn along with the churn, it becomes the Madhumay Nashak churn. So if a single drug therapy like Hariki churn, Vivitak churn and Amla churn is there, we can ask the patient to go any of the ingredient in a double form, double dose or triple dose or 4-time dose. This is we also use a Vivitak churn in the say Kaf Vikar also. So this is a great information given by Professor Jasar. Then we started our guest speaker suppose, and Dr. Professor Anil Shukla is always, he is not only a man of Rashtas, he is a man of Devagun. But Rashtas only survive when the Devagun is there. Because without Devagun's help, we may not go for the Bhavana. Kasaundi ko hath mein Bhavana lagai or Gajput Funka under the process of the Abrak Bhasma. So when the Kasaundi Quath is there, Devgun is there. So Dr. Professor Anil Shuklaji's information with all the rules and regulations regarding the manufacturers and factories, that is entirely different. As far as the academy is concerned, he is a masterpiece person regarding the Devgun is concerned. A well identifier of 400, 500 herbs by their own naked eyes, not under the process of say microscope and all that. So, and his oratory spirit is also always held, and he is the most demanded person during the area of our webinars. He is belonging to Ayurved, Vishwa Ayurved person also, and he is the man of distinction with no hyperbole. I have utilized him, I have used him, I have been with him in Bombay, in Tashkent also. So we all remember all these things. Well, there was a glitch during our presentation 2-3 times. So our guest speakers, really, I'm very sorry that they suffered for the interruption, like when Rajeev Kurele was addressing. So the second was Dr. Rajeev Kurele. I'm really proud of him that he has learned the all rules and regulation on digits. That what is the regulation, what will be that regulation on that issue, on that issue, on that issue. In this way, he put forward the 54 to 57 books reference. These are there. And then again, as far as the Ghatak is concerned, 161 में compile होने के लिए बात कही. And he also divided for the classical and propertial and patent medicines concept. We touched our area because 9 has caused, so I will not go into details in the description, because those who were there, they got information, of course, under some interruption. And Professor Jha repeatedly giving us guidelines and leading us regarding all the small and big topics like Arogbartnivati. 2 things are there, Tamdvas and Kutki, where we are maintaining the quality, where we are getting the purified form of it.
if the Arogvartini is used, it will give that result, but still it is not. He also confessed that the present era available medicine is not having value. We have got our S.K. Mathur Sahab, who was this MBBS and the head of the department of our Rog and Vikrit Vigyan. He was always ready, always keen. अग्नुति बताना जब कभी आरोग्य अपना सप्लाई आ जाए हमें चाहिए 5 रुपए पर्चा बनवाया हमेशा लेके जाते थे मतलब मॉडर्न मेडिसिन पर्सन्स आरोग्य के प्रति इतने इंक्लाइंड है और ये सिंपल कहा जाता था कुटकी वहां पर है तो वो न केवल एकीकृत विकार को दूर करेगी वो हल्का सा माइल्ड लग्जेशन करेगी जो शायद आज गुरुजी ने बताया कि नहीं दे पा रही तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डाउन हुई है इस चीज की हम लोगों ने मैंने अपना एक तनाव दिखाया एक टेंशन दिया ये चीजें हैं तो हमारा चिकित्सा कार्य जो है निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है मैन्युफैक्चरर्स को इसमें ध्यान देना चाहिए चर्चाएं आई च्यवनप्राश के बारे में बताई आप चर्चा की कि हमारे यहाँ के च्यवनप्राश कभी भी जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पवन जी आ गए उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया he has got a wonderful experience of manufacturing study academic manufacturing administration and really the quality control the whole of the experience of 37 years is along with him so I am not daring to put anything on his address but the fact is that he touched all these things and today the pitch of his voice what I inferred is wonderful as if a retired person supposed to speak he spoke these things that really dhool should not be purchased and dhool that dust should not be purchased or that should not be sold both the conditions they are supposed to be allowed or if it is हमारे यहाँ supplied बोरे के बोरे देवन संभाल ने गेट से लौटा दिए थे फजीयत पे हुई उसको पेवारी से हटाने की बात आई ट्रांसफर बात आई लेकिन नहीं कंट्रोल so many preparations are under process and is stopped simply because the Bansulocin is not available. Simple Sitopla is under process. Our secretary, principal secretary visited Rishikul when the expansion of our Rishikul pharmacy was there. Das Saab. He also told that this is the fact. You made the quality supplier of this ingredient. I would like to get it prepared. So government sector, if honest persons are there and they are keen to observe the quality control, definitely the things will be on market. And that's why when 5 lakh rupees Corona, this Ayush Kala was prepared in the school pharmacy, was distributed not only to the common men, to the ministers, especially Premchand Agrawal, the speaker, the assembly speaker of those times, he, under his guidance, in Rishikesh, in other nearby districts got it. So we have got all proud. When the quality is controlled, definitely Ayurvedic medicine work, and especially when it is in a form of kala, because it is a neat one. After formulation, getting in bottle, putting something, say manufacturing, so on and so forth. But current preparation, just like Putpak Vasa Saras, Putpak Vasa is nascently prepared, and it is wonderful of its action. So these things, Dr. Pawan Sharma touched all these things, and then came the era of our panel discussion. 11 persons repeatedly in first, second, and third round participated well in time. Professor our Shukla ji, our Rajeev Kurele ji, Professor Karthikeyan ji, they all touched everything. And Dr. Shukla ji, something I today started getting my red pen also, so that at the time of submission, that because the problem that important things are missed. So I just made a red mark over the thing which I have to spell differently. So getting a certificate and follow the norms. These two are different phenomenon uttered by Professor Shukla. So if at all it is there, the regular training is also required. Training to the manufacturer, training to the Nirman Ved, training to the packer, and training to the transporter, training to the weight observer. The contents, this file contains 100 ml. It should go at least 95. And if it is 60, then it is not only cheating, dishonesty, and really making befool of the patient who is paying the fullest money. The file is completing. That's about the 3 दिन में खत्म हो गई. कहाँ किसको समझाया जब वो पीटी में बैठते हैं कुर्सी पर तो बहुत ऐसी awkward situation face करनी पड़ती हैं. So manufacturers are repeatedly alarmed with this platforms discussion by our great speakers,
that if everybody will be honest, if at every level the honesty will be observed, the things will be different. The Ayurveda will be at top. So repeatedly involving our Anil Shukla ji, Professor Guruji, our Jha Sahab, then again Dr. our Rakesh Nigam sir contribution is also of great value. He underlined two things very importantly, and that is especially the yoga not to be commercialized in the terms of the medicine. It should be observed for the health promotion, that too at mental status. Of course, persons are taking because that mental faculty is also within the body, and body is supposed to be healthy. Then only a person be able to go for meditation or dhyan, dharana and samadhi. So both things are there. It may not be used, but if it is used in a form of anulom vilom, other things are asana itself. As Professor Mandan said, is showing that the physiology of yoga written by UK person. Now see, I have also gone through that one. He sent me directly that link also. Instead of saying physiology of yoga, if I say physiology of yogasana, physiology of pranayama, it will be more informative. Because if I am saying that physiology of yoga itself, then it is a little bit a confused word for me. If I say that physiology of yama, very nature, it's very clear. If you observe one of the karma, yama or niyam, we will be in position to net self and to inform in net self that you observe yama for 15 days. Now you see that your personality is changed or not. So for the personality's improvement, we can be a little bit classified physiology of yama, physiology of yoga, physiology of yogasana, physiology of pranayama, and like that. So I think I have covered a lot. Professor Nigam sir is also there. Our repeatedly Kartikan sir is also talked about, and especially because if I am to declare the man of the match of today's webinar is Professor Anil Shukla ji, because he also touched so many things there. That he talked about the Shikakai. Very naturally, we used to say that begans of begans, Adatruta vesica and Texas Bacata, that been taken away from here in Haridwar, Shivalik ranges to Japan. So goes the case with Shikakai, whether you sold them or they approached that one, but that is gone. So if at all the Master Darshan Chud is concerned, today you revealed one more thing, that Kirat Tikth is one thing, Chirayata, which is to be included there. And if it is not, Kalmeg itself is not a simply available thing. Kalmeg, when I go for Kalmeg Churn or Sharpunkha Churn, it's very hard. Bhumyamal ki Churn, these are directly for cirrhotic liver, for alcoholic liver, or simple liver disorder. Even they have claimed that Leaf 52 HB, they have also claimed that it contains especially these ingredients and it is responsible for the warding of the hepatitis B, etc. So if Kalmeg is used or the Shirpunka Churn is used, this is equally good apart from other herbo mineral preparations. Means our say Egudal law or something of that nature, along with some Navayas law or law of Asma, etc. So these things are underlined by Professor our very dear friend Professor Shukla ji. And Tejinder also, Dr. Tejinder also put forward that as the Ashtavag is not been containing by any of the preparations, though claim books are there by Dr. Balkishan ji, etc. But it is also, we are all using the, say, Prathinidhi for that. So these things were there, and Kartikan ji again told that what genomic aspect of Ayurvedic medicines are being studied by one of his friend in US also. So they are all with their open mind and heart, whatever the exact and original part of Ayurveda, may it be there in text or may it be in a form of the miraculous activities containing the Ayurvedic preparation. They should be kept intact. Then only the name of Ayurveda, the fame of Ayurveda, the efficacy of Ayurveda, the value of Ayurveda will not only remain at top in India, but also throughout the world. This is what my simple suggestion of today's webinar. Thank you so much. Greetings to our guest speakers and our regards to all the great dignitaries of today's platform. Thank you. Thank you so much. Over to Dr. Pawan Kr Sharma. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir, today. This webinar is really, I am grateful to all the speakers and audience
because this was planned in the morning and we are able to conduct in the evening. Thank you, thank you, thank you for your blessings. On next Sunday, on 10th, we will be for industry oriented, smart marketing for Ayush industry. What will be the smart marketing? So marketing and R&D and clinical research, we will touch every point. I would like to communicate my thanks to Anil Shukla ji, to Kurele ji, Karthikeyan sir, Tejen Singh ji, and our guardian Madan sir and Agnihotri sir. Thank you, thank you, thank you very much, sir. Good night to all. Thank you, sir, Pawan sir, for giving opportunity, and my sincere regard to Dr. Madan Thangavelu sir and Dr. my Guruji P.K. Gunotri sir. I am a very small person, sir. You are keeping to high regards for me, but I am a very small person. Keep blessing me. Thank you, sir. Yom, Namaskar ji. And Stina ji, thank you for joining us from Sweden. Stina ji, namaskar.